Assalamu alaikum and welcome back to the run chase. Sky Star require 154 from their allotted 20 overs with 10 wickets in hand to win this one, and this is the final league round robin game underway, and tomorrow it's going to be the final quarter final between these two teams. Then on the very next day it's going to be two semi-finals coming your way, but this match is of importance only if these two teams make good use of this league round robin game, because batters can think about the track, they can read it very well, and they can look at the bowlers, how they are releasing the ball, where they are pitching the ball. On the other side, bowlers will try to read each and every batter, how they are extracting and how they are batting well, how they are applying themselves on this solid batting track, and which is full of runs. It is a belter of a track. Well, Nazir, 154, do you think it is enough? अस्सलाम वालेकुम, स्वागत सभी व्यूअर्स का। एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित दूसरी पारी लेकर के 154 चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए स्काई स्टार बडगाम की टीम को। हालांकि क्षेत्ररक्षण टीम यूनाइटेड इंपोर्ट्स की इस समय एक घेरे में खड़ी बीच मैदान में पहुंच चुकी है और एक मंत्रणा चलती हुई आपस में ये देखना होगा जो लक्ष्य 154 का है। हालांकि अगर बल्लेबाजी की हम बात करें तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी लाइनअप है उनके पास जहां स्काई स्टार बडगाम की टीम का सवाल, लेकिन एक दबाव जरूर होगा। हालांकि इस मुकाबले की अगर हम बात करें तो ये अंतिम लीग मुकाबला है पूल डी का, और ऐसे में एक अभ्यास और कहना चाहिए एक एक्सपेरिमेंट अगले सत्र के उस पूल डी के क्वार्टर फाइनल मुकाबले के, और जहां जैसा आपने स्पष्ट कर दिया कि परखना होगा विकेट को, गेंदबाजों को, और वो जो कमियां होंगी वो खामियां जो होंगी, चाहे वो बल्लेबाजी की टीम हो, चाहे गेंदबाजी हो, गेंदबाज हो, बल्लेबाज हो, क्षेत्ररक्षण हो, उस कमी को पूरा करने का प्रयास अगले मुकाबले में जरूर करेंगे और निश्चित तौर पर वो गलतियां नहीं दोहराई जाएगी। तो कुल मिलाकर इंपॉर्टेंस है इस मुकाबले के, महत्व है इस मुकाबले का। प्रारंभिक जोड़ी बीच मैदान में पहुंच चुके। Thank you, Malik Amir, the first viewer, and others are the part of live broadcast. 154 is the target, and the opening pair is out in the middle, Adil Kachru and Adil Guldan. It's Adil square out in the middle, and Nasir Bashir demoted down the order today, and Sky Star will use a new pair here as an experiment, as a part of discovery here, and let us see, will they find out yet another good pair and a convincing one up front. And it's Adil Guldan with a new comer with a new one alongside him. Out in the middle is Adil Kachru. Guldan and Kachru out in the middle. Fog, mist, smog, overhead conditions, overcast conditions, inclement weather isn't perfect at all here at the center, but you know that we have to cover each and every game, and our creators are really passionate and patient too, showing a lot of patience, and even under overcast conditions they are ready to take the challenge because they want to learn the tactics. Even if they get an opportunity to represent country at any level, they will feel themselves in a position that they can do wonders irrespective of conditions, be it the hot weather or be it the overhead conditions like this we have at the moment, we are experiencing as of now. It's going to be over number one. Basit will open the attack. A slip is in place. Then there is third man. There is backward a point, cover point, extra cover and mid off. Mid on, short mid wicket, and a fielder backward of scare. There is Owas Razak. Umpire says let's play. Here we go. Roll on. Ball one coming up. Here is Basit. Good delivery, and Adil Guldan brings his bat down in time, keeps it away. No run there. A dot ball. None for none. It is 0 on either side of hyphen. After ball one, Nawab Kashmiri and Malik Amir are the part of live broadcast. One with it's none for none in over number one. आदिल गुलडान पारी का प्रारंभ कर चुके हैं। आदिल काचरू आज उनके साथ बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं। हालांकि नासिर कुमार को आज प्रारंभिक जोड़ी के रूप में नहीं भेजा गया है, तो वे अब अगले नंबर पे बल्लेबाजी के लिए संभवतः उतरेंगे। फिलहाल ये गेंद गुलडान के लिए इस बार बल्ले को तिरछा किया, ऑफसाइड पे धकेला लेना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे वहां क्षेत्ररक्षण के पास वापस अपने कदम सुरक्षित में क्रीज में खींचे बगैर किसी रन के। बढ़िया शुरुआत, 2 डॉट गेंदे, और शुरुआत में एक अच्छी साझेदारी की आवश्यकता, ठोस शुरुआत देनी होगी, एक ठोस आधारशिला की आवश्यकता यहां स्काई स्टार बडगाम की प्रारंभिक जोड़ी द्वारा। शून्य बगैर किसी विकेट के खाता अभी खुला नहीं है स्काई स्टार बडगाम का। 2 गेंदों का अभी तक सामना किया गुलडान ने, वे खाता नहीं खोल पाए हैं। अगली गेंद लेकर के तैयार
बासित भट्ट जो कि तेज गेंदबाज प्रमुख हथियार यूनाइटेड इंपोर्ट श्रीनगर के, वो इस समय गेंदबाजी प्रारंभ कर चुके हैं। आज खालिद भट्ट मुकाबले में खेल नहीं रहे हैं और ऐसे में उनकी अनुपस्थिति में एक और नए चेहरे को आज जगह मिली है। इस बार गुलडान ने फिर ऑफसाइड में खेला, वहां पर तेजी के साथ फील्डर लपक पड़े, फील्ड कर लिया, एक और डॉट गेंद, एक और बिंदी गेंद, 3 गेंदें अभी तक हुई हैं, रन अभी तक आया नहीं है बल्ले से गुलडान के। Over number 1 in progress. Basit Butt operating. Basit Butt is bowling. It's none for none. It's not for nothing. In over number 1, the two openers out to the centre, Adil Guldan and Adil Kachru. Nothing on the board. They're in search of first run here. Well, Adil Kachru and Adil Guldan, knowing that they're chasing 154, they need to be circumspect. Here is Basit. And that's a good shot. That is safe shot. Flicked away, couple of bounces and into the skyline boundary for 4. Just Bukhara 4. And Adil Guldan is away with that boundary. He's off the mark. And Sky Star, high flying ball into the sky for quite some time, coming down and off the turf goes for 4. And now they're 4 for none in over number 1. Azir, off the mark in style. A quality shot from Guldan. देखिए बहुत बढ़िया स्ट्रोक उनका था और उनका प्रिय स्ट्रोक, गुलडान एक आक्रामक शैली के बल्लेबाज है, एक विस्फोटक बल्लेबाज है और इस प्रकार से वो खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं और शुरुआत में उसी प्रकार की चौके से खाता खोल लिया, 4 रन बगैर नुकसान के। अगली गेंद लेकर के तैयार गुलडान के लिए। गुलडान एक बार फिर स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं, इस बार फिर बड़ा प्रहार करने का प्रयास, पूरी तरह से वहां पर चकमा दिया, बल्लेबाज को बीट किया, ऑफ स्टंप पर ये गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के। 5 गेंदें हुई है, 4 रन पहले ओवर में और यहां बासित भट्ट गेंदबाजी कर रहे हैं। गुलडान और आदिल काचरू ने पारी प्रारंभ की है स्काई स्टार बडगाम के लिए। अंतिम मुकाबला पूल टी का और कल निर्णायक क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा, वो चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला जो कि इन्हीं 2 टीमों के बीच इसी मैदान पे होना है और वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा और वहां की विजेता टीम जो है चौथी और अंतिम टीम होगी जो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी और उसके बाद फिर सेमीफाइनल की भिड़ंत। Exactly, on the very next day, the 4 teams will fight against each other to seek their place and to cement their place in the grand finale of Kashmir Cricket League Chandigarh. And that one plays it onto the mid-on area, picks up a run. That's all he's going to get here. Guldan will keep the strike for the next over. Alim Sheikh does the mop-up, but none before Guldan scamper through and he will keep the strike for the next over. Adil Kachru is yet to open his account. He hasn't faced any ball yet. Well, having a word with Guldan, and now Guldan is getting ready to face the fresh over. And on the other side, Adil Kachru batted yesterday or day before yesterday for 22 odd runs or 21 odd runs I think, and after that he was packed to perfection by his opponent bowler and was sent packing. Faizan, Nawab Kashmiri, Malik Kamir, we got Tamir and others. 5 with applause. JK Sports Time this time round on YouTube. So dear beloved listeners and viewers of JK Sports Time, hop tab JK Sports Time way, but on YouTube this time around, and find out what Guldan and Kachru has got for all of us in its kitty and store. Are they going to entertain us, or are they going to keep themselves away from their natural tendency that they possess in abundance to go after the bowlers? Will they fail to do that this time round, or they're going to go after the bowlers here? 5 with applause after 1. Over number 2 begins. Alim Sheikh into the attack. And Guldan keeps it out towards point area. No run there. The very first ball. Guldan bends his back. Head still. Watches the ball very keenly. And pushes it away gently onto the upside. But the fielder was quick to respond. So no run of the delivery. 5 with applause. Here's the next one from Alim Sheikh to Adil Guldan. Oh, he has cleaned him up. Clean bowled. Look at that one. Guldan playing all around that one. Castled him and cleaned him up. And that follow wicket brought to you by Jas Bukhara. It's 5 for 1 in over number 2.
अलीम शेख जैसे ही गेंदबाजी के लिए आए और उस जादुई गेंदबाजी, वो फिरकी गेंदबाजी रंग लाई, विकेट मिला, गुल्टन को लौटना पड़ा वापस और पहला विकेट वो भी गुल्टन के रूप में इस समय मैदान से बाहर। स्काई स्टार को यहां पहला नुकसान उठाना पड़ा और वो झटका दिया अलीम शेख ने। और अलीम की अगर अब तक की इस प्रतियोगिता में बात करें, बहुत बढ़िया गेंदबाजी उनकी रही है, आकर्षक गेंदबाजी। वो जो अंतरराष्ट्रीय सर पे अजंता मैंडिस आए थे उनको पढ़ना आसान नहीं था और उस प्रकार की गेंदबाजी जब से वे आए हैं, विकेट का अंबार उनके नाम। Well, exactly 5 for 1 and a heap of wickets or a bundle of wickets or a pocket or a groove under his belt in this tournament. And what an outing again, what a start, dream start. A ball on the very first ball of his fresh quota here. Yesterday he picked up too many wickets and again starts up, but he's bowling with the cross seam or off the cross seam. This is interesting and it keeps bit low. It tends to dip on a certain basis of a certain length. We have seen yesterday again, we are experiencing it. Well, he's in his very first over and ball is dipping again and it's out the back of batter. So then it is 5 for 1 in over number 2. First ball wicket that brings Horar Sophie to bat. Horar will face the likes of Alim Sheikh. Alim, wicket on the very first ball, a dream start. What a boy he is, golden hand, golden arm in operation and a very first ball wicket. First ball scallop and a breakthrough and the next one he breaks free. Good shot from Horar Sophie and that brings and that boundary takes him to 4. He's off the mark and Sky Star 9 for none and that brings a boundary. That ball brings a boundary to Horar Sophie and it was played nicely in the gap and fielder decided to give it up and lets it go through. And Tamir talking of video quality because weather isn't perfect, dear brother, sun isn't out here. We have done everything from our side, but we'll try to improve in next few days. But you know that the next one again in the gap will beat the man and this is the second occasion in the same direction, punches that one away and hits the boundary. 2 in 2 back to back on the trot, streak of boundaries. Will he be able to extend that streak? Will he prolong that? But 2 boundaries, another 4 brought to by Just Bukhara. Lot of things happening straight away in his fresh over. Alim Sheikh in his very first over, wicket of the first ball and the next 2 deliveries gone for runs, 8 of 8 so far, 13 on the board, 154 is the target, 141 more runs needed and that one can't find the middle of the bat, but nonetheless will pick up a single before Muzammil Feroz can come in and field that one. So another run added, 14 with for the loss of 1. Now they are 140 runs behind, 2 balls remaining in over number 2. 1.414 एक विकेट के नुकसान पर गुल्टन, जिन्हें के साथ बोल्ड किया था आलिम शेख ने अपने पहले ही ओवर में। आज शुरुआत बासित भट्ट ने की और उसके बाद आलिम शेख जो कि स्पिन गेंदबाज है और स्पिन आक्रमण से वहां शुरुआत करवाई, दूसरे छोर से वहां पे खेला जरूर, अपने फॉलो थ्रो में फील्ड कर लिया, रन मिला नहीं। 1.5 ओवर के बाद 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर और सबसे यहाँ ओवर समाप्त हुआ। जी हाँ, 2 ओवर के बाद 14, 1 विकेट के नुकसान पर 7 रन प्रति ओवर के हिसाब से। और अपने पहले ओवर में 9 रन जरूर खर्चे आलिम शेख ने, 2 चौके उनके विरुद्ध होरर सोफी ने लगाए। आदिल गुल्टन आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। आदिल काचरू उनके साथ पारी का प्रारंभ कर रहे थे और अब पहली बार आदिल काचरू स्ट्राइक लेने की तैयारी में। वो 0 पे है, 2 गेंदों का उन्होंने अभी तक सामना किया है। 14 पे 1, तीसरे ओवर की शुरुआत आलिम शेख का बढ़िया ओवर और उसमें उन्हें 1 विकेट मिला। और एक बार फिर बासित भट्ट जो कि पारी का तीसरा ओवर लेकर के 154 बना रहे हैं। जेके स्पोर्ट्स टाइम के यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपके साथ जुड़े हैं इस बार टंगोरी बनूर चंडीगढ़ से, जहां कश्मीर क्रिकेट लीग चंडीगढ़ की यह प्रतियोगिता अंतिम चरण की ओर, पूल डी का अंतिम मुकाबला, कल अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबला इस पूल का और उसके बाद फिर अंतिम पड़ाव में सेमीफाइनल और उसके बाद फिर वो अंतिम बढ़त ये गेंद। और इस बार सिर्फ दिशा भर दे दी, लेकिन इस बार वहां पर खिलाड़ी तैनात थे, उनसे मिसफील्ड हल्का सा वहां पे हुआ और नतीजा जहां पे रन नहीं होना चाहिए था वहां 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ अब स्काई स्टार 15 पे पहुंच चुकी है। 1 विकेट के नुकसान पे 2.1 साझेदारी की आवश्यकता। यहाँ आदिल काचरू की पारी काफी महत्वपूर्ण होगी, उनकी पारी देखने लायक होगी, उनका फॉर्म में लौटना काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि पिछले कुछ मुकाबलों से वो कुछ ज्यादा कर नहीं पाए हैं अपने लिए और अपनी टीम के लिए। Well, exactly, he is struggling here, is struggling very badly. He isn't finding runs and it's a complete drought as far as his individual
scores are concerned. Well, he's going through lean patch here, scratchy innings and scratchy starts over the past couple of days for the Sam boy, and he's can't get that, and he's yet to open his account. It's leg by signal by advocate Hilal Dar. So a boundary brought to you by Just Bukara in the form of extra, score propelled to 19 for 1 in over number 3. On strike is Adil Kachru. Will face the likes of Basit Butt. 3 balls faced by Adil Kachru, and is yet to open his account. But Horar Sophie is on to 10 into the double figures of just 4 bowlers. And look at his positive approach, intent, and he's playing his shots here. Horar Sophie, and played onto the offside twice in an over. One was the punch, and that too off the back foot. Here is Basit, and oh, look at that, when he goes deep in crease, looks to pull it away, and ball hits near the supplies of the blade, so he gets away with that one. Lucky to escape and survive, and it wasn't a regulation one return from the blade. It falls just close to the batter. Score man static, 19 for 1. 154 is the target. There is a wicket keeper, then slip, and a third man in place. Backward a point, cover point, extra cover and mid off. Basit again runs in, wraps him on the pad, short for LBW and turned down. It was clearly going down leg. Well, bowler Basit is looking at the batter where it hit him. Was it in line or it was clearly going down leg? Good decision from advocate Hilal Dar. The valley is very much owned and a rare breed of umpire in the valley, Alim Dar, and it's 19 for 1 after 2.4. Over number 5 we are in. 154 is the target. Well, the 2 batters need to rotate strike and convert ones into twos and look for singles at least. First priority for Adil Kachru is to rotate strike, and look at that one. Oh, what a delivery. Beats him on that scare cut there. Shapes for the scare cut. Deep in crease. Isn't happy with himself. Looking skybird. Looking towards heavens. His head held high and eyeing towards the sky, but to no avail on that occasion. Well, might be seeking a divine intervention to get himself underway against the likes of Basit Butt. He's bowling really well. That was nasty one, but that surprised the wicketkeeper too. Tahsin Dar is keeping wickets for his team. Here is the last ball. Again, dogging shot and clips it away off his rib cage onto the onside. 1 more run at it, and that single ends the over number 3 on a good note. 3 done. It's 20 for 1. Thank you, Cricket Ramhal. Then we got Abid bin Asad, who got out. It was Adil Guldan. Cleaned it up by Alim Sheikh, a local lad and a local boy here in this part of the world. He struck on his very first ball, and that just gone through Guldan's defense, and he was nowhere near on that delivery on that occasion, and it was the bowler who had the last laugh on that occasion. 24-1. 3 ओवर समाप्त 20, 1 विकेट के नुकसान पे। ये है अब तक का लेखा जोखा इस पारी का। दूसरी पारी जहां 154 रन बनाने हैं स्काई स्टार बडगाम की टीम को, और अब तक 20 रन बने हैं 3 ओवर में। 1 विकेट गुल्टान का मिला है आदिल काजरू और हुरैर सोफी बीच मैदान में बने हुए हैं। जेके स्पोर्ट्स टाइम के प्रायोजक शाइनिंग स्टार पंप और MHM मल्टी ब्रांड फैशन स्टोर अफीवानी फैशन फीसा एंथम स्पोर्ट्स इंडिया जस्ट बोखारा ग्रीन लाइन्स क्रिकेट क्लब हमदान हुरिकेन्स डलगेट स्पोर्ट्स क्लब पीरज़ादा फैजान और जानिफ हाफिज धन्यवाद आपका समर्थन सहयोग देने के लिए। नए ओवर की शुरुआत, पारी का 4था ओवर, और दूर वाले छोर से एक बार फिर आलिम शेख सफल गेंदबाज अब तक के, अपने पहले ही ओवर में सफलता। दूसरे ओवर की शुरुआत, इस बार बढ़िया गेंद की पिच तक पहुंचे, उसको खेला मिड ऑफ की, और वहां पर संभवतः मिड ऑन पे खिलाड़ी तैनात थे, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। मुजम्मिल फेरोज, 1 रन जरूर मिला आदिल काचरू को, और वे अब पहुंच गए 2 पे संभवतः, जी हाँ, और सामने अब हुरैर सोफी होंगे। कुल चौक 21, 1 विकेट के नुकसान पे 3.1 ओवर की गेंदबाजी।
हुरैर सोफी है सामने, जो कि दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। और दाएं हाथ के गेंदबाज आलिम शेख स्पिन गेंदबाज, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, और उनका पढ़ना आसान है। और उनके 4 ओवर काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे इस पारी में, जहां स्काई स्टार बडगाम की टीम की बल्लेबाजी की बात है। अगली गेंद आलिम शेख की, चले ये गेंद, और इस बार बढ़िया गेंद, लेकिन बैट और पैड मिला करके सम्मानजनक रूप से रोका फील्ड विकेट कीपर द्वारा बगैर किसी रन के। 21 पे 1, 3.2 हुरैर सोफी 10-5 गेंदों से, आदिल काचरू 2-8 गेंदों से नॉन स्ट्राइकिंग चोट पे हैं। और आलिम शेख चौथा ओवर कुल मिलाकर पारी का और अपने कोटे का दूसरा ओवर। अगली गेंद उनकी, एक बार फिर धीमी गति की गेंद ऑफ स्टंप पर, वहां पर प्रयास असफल हुआ। बैकअप कर रहे हैं बाउंड्री लाइन पे खिलाड़ी, वे जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास समय था 1 रन लेने का। 1 रन और खाते में जुड़ा। अब आदिल काचरू के पास स्ट्राइक रहेगी, जो कि 2 पे नाबाद है। 22 पे 1, 3.3 ओवर की गेंदबाजी। ये पारी का चौथा ओवर इसमें चल रहा है। अलीम गेंदबाजी कर रहे हैं। ये गेंद इस बार फिर बैक फुट पर गए, और उसके बाद जो स्ट्रोक सीधे बल्ले से खेला जरूर मिडल ऑफ द बैट, लेकिन गति ज़्यादा वहाँ स्ट्रोक में नहीं थी, और ऐसे में अपने ही फॉलो थ्रू में फील्ड कर लिया आलिम शेख ने। 22 पे 1, 3.4 ओवर की गेंदबाजी। ये पारी का चौथा ओवर। आदिल काचरू है सामने। ये गेंद काचरू के लिए एक बार फिर बढ़िया गेंद, खूबसूरत गेंद, अच्छी गेंद, दबाव बढ़ता चला जा रहा है आदिल काचरू पर, और अभी तक वे 10 गेंदें खेल चुके हैं। मात्र 2 रन उनके बल्ले से। यहाँ सिंगल डबल की आवश्यकता, यहाँ स्ट्राइक को रोटेट करने की आवश्यकता, वही गेंदबाज दबाव लगातार बनाते हुए। इस बार फिर खेला ऑफ साइड में, लेकिन इस बार रन मिलेंगे जब तक मिड ऑफ के खिलाड़ी आकर के गेंद को फील्ड करते। 1 रन जरूर मिला, और 1 रन के साथ 23 पे 1 ओवर समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन, बढ़िया ओवर, और मात्र 2 रन इस ओवर से। क्या महत्वपूर्ण ओवर ये रहा, क्या बेहतरीन ओवर आलिम शेख का रहा। अपने 2 ओवर में मात्र 12 रन खर्चे, 1 सफलता प्राप्त की। 4 ओवर समाप्त, 23, 1 विकेट के नुकसान पे। नए ओवर की शुरुआत, पारी का 5वां ओवर, और यहाँ सबकते गेंदबाजी में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और क्या ये परिवर्तन रंग लाएगा? क्या यहाँ परिवर्तन के तौर पर जब गेंदबाज को लेकर के आए यूनाइटेड इंपोर्ट के कप्तान, एक विकेट मिलेगा, एक विकेट की तलाश में है, क्योंकि दबाव बढ़ेगा स्काई स्टार बडगाम की टीम पे, और वहीं पे आदिल काचरू और हुरैर सोफी का प्रयास होगा कि यहाँ से विकेट को सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि विकेट का महत्व कितना है वे जानते हैं। और ऐसे में किसी भी हड़बड़ाहट की स्थिति वो दिखाने का प्रयास नहीं करेंगे, किसी जल्दबाजी से वो स्ट्रोक खेलने का प्रयास नहीं करेंगे। संयम, आत्मविश्वास दिखाना होगा। और ऐसे में नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद, और इस बार पटकने का प्रयास, गेंद सीधे ठीक हमारे कमेंट्री मंच के सामने। 4 रनों के लिए लेग बाई का इशारा अंपायर एडवोकेट हिलाल का। 27, 1 विकेट के नुकसान पे 4.1 के बाद। Well, another extra boundary added to the tally off the body, and it goes past leg by, is called and given. 27 for the loss of 1. We are in over number 5. Adil Kachu gets that, and he will take that. This is second occasion when he failed to make any sort of connection with the bat, but the body does parry it to the fence. Adil Kachu on to 3 of 12 balls, so you can understand how scratchy it has been for Adil Kachu. The next one, good delivery, plays it only as far as extra cover is concerned. No run, again a dot ball, but Adil Kachu and Hurar Sofi both are capable, both are able cricketers, and if Adil gets going, you know that he's going to entertain all of us. Then we're going to witness some great shots from his blade. So is the case with Hurar Sofi, but as of now it's Adil Kachu who's struggling very badly here. He's on to 3 of 13 balls. A slip is in place for Basit, and Kachu this time plays it in the gap and will get a single. And this is the sensible cricket. He need to persist with that, keep hitting the gaps and just place the ball in the gap, and so does Kachu on that occasion, and he's off for a quick single. Brings Hurar Sofi on strike, who's on to 11 of 6 balls. Well, Shaukat is busy in capturing every moment of this all important run chase. It is Basit Butt who's in his 3rd over. Oh, look at his figures. None for 8. It is his 3rd over. Here is Basit again, and Hurar could only manage back to the bowler. Look at Basit. He's got pace, he's got bounce, he's got everything to tease batter and unsettle the batter. And here is an example of that. A batter like Hurar Sofi who's loving pace and bounce, but this time could only manage back to the bowler, and he's trying to understand how Basit is releasing the ball and where he is pitching. And I saw him experimenting with his right hand, and
just talking to himself there. That ball is doing quite a bit. It is kicking off the surface. Sometimes it tends to remain low. It stays low, but this time it kicked. Here he is again. This one wanted a run. This could be tight. Could be tight. Directed would have been Adil Kachru, man in caution. It was a risky one. Hurair, who just followed himself with that shot and wanted a run, he was off for a quick single, and for a while it was like that, yes no, big mix up in between, but in the end Adil says, yeah, I'm gonna respond. But he was running on the danger end. He gets away with that one. It's 29 for the loss of 1. Last ball is coming up of over number 5. 29 पे 1, 4.5 पांचवा ओवर और पूरी तरह से अंकुश इस समय बल्लेबाजी पे गेंदबाजों द्वारा। आदिल काचरू और हुरैर सोफी लगातार इस समय प्रयास करते हुए कि एक एक रन से इस पारी को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन गेंदबाजी अप टू द मार्क, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। बासित आखिरी गेंद लेकर के 29 पे 1 उनकी ये गेंद, और इस बार पैड पे टकराई, लेग साइड पे चली गई, तेजी के साथ रन दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज। लेग बाय का इशारा होगा अंपायर का। जी हां, 1 रन और खाते में। ओवर की समाप्ति 5 के बाद 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहां रन बने हैं। अभी भी 124 रनों की आवश्यकता बची हुई 15 ओवर में, यानी कि 90 गेंदों से 130 रनों की 124 रनों की आवश्यकता। हालांकि T20 फॉर्मेट में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ जिस प्रकार की गेंदबाजी हुई है वो साधारण गेंदबाजी, वो नपेतुली गेंदबाजी, वो अनुशासन दिखा है अब तक गेंदबाजी में, जहां तक यूनाइटेड इंपोर्ट श्रीनगर की टीम का सवाल है। 30 पे 1, 5 के बाद 6 ओवर की शुरुआत। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर होगा। हुरैर सोफी और आदिल काचरू बीच में दबे। हालांकि आज आदिल काचरू और आदिल गुलडान ने पारी प्रारंभ की थी, लेकिन गुलडान ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। साफ बोल्ड हुए अलीम शेख की गेंद पर। 2 ओवर की गेंदबाजी अलीम शेख ने की और उसके बाद उन्हें हटा लिया गया है, और अब उनके स्थान पर एक नए गेंदबाज का चयन, गेंदबाजी में परिवर्तन, और फैजान रूफ जो कि एक और तेज गेंदबाज, जहां तक यूनाइटेड इंपोर्ट श्रीनगर की टीम का सवाल है, उन्हें लेकर के आए हैं कप्तान। शायद एक साझेदारी जो धीरे धीरे से पनप रही है, इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे, और उसमें यदि सफलता मिलती है गेंदबाज को तो निश्चित तौर पर यह सोने पे सुहागा होगा। क्योंकि शुरुआत में अगर आपको विकेट मिलते हैं तो एक दबाव लगातार बल्लेबाजों पर बढ़ता रहता है, और आने वाले जो बल्लेबाज हैं, जो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, उन पर एक दबाव होगा, और वो अच्छा फिर कहा जाएगा यूनाइटेड इंपोर्ट के गेंदबाजों के लिए। 30 पे 5 के बाद 6 ओवर की शुरुआत। परिवर्तन के तौर पर तीसरे गेंदबाज, और फैजान हमारे साथ जुड़ चुका है, और नासिर कुमार जो है वो खेल रहे हैं इस मुकाबले में। हालांकि आज प्रारंभ करने नहीं पहुंचे, और देखना होगा क्या वो नंबर 3 पे उतरेंगे, ये देखना होगा, अथवा नंबर 4 पे। फिलहाल राइट आर्म ओवर द विकेट फैजान की गेंद, और इस बार मिडल स्टंप पे आते हुए गेंद को खेला, मिड ऑफ पे 1 रन पूरा कर लिया। 1 रन के साथ ही कुल योग पड़ता हुआ 31, 1 विकेट के नुकसान पे 5.1 ओवर की गेंदबाजी। हुरैर 12, 8 गेंदों से, आदिल काचरू 5, 16 गेंदों से, और अपना पहला ओवर फैजान रूफ इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं यूनाइटेड इंपोर्ट श्रीनगर की टीम के लिए। फैजान जो कि इस छोर से यानी कि कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं, और उनके सामने हुरैर सोफी जो कि दाएं हाथ के बल्लेबाज। 31, 1 विकेट के नुकसान पर ये गेंद, और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर स्ट्रोक खेला, लेकिन वहां पर खिलाड़ी तैनात थे बिल्कुल ऑफ साइड में। गेंद सीधे उनके पास पहुंची और उन्होंने सफाई के साथ गेंद को फीड कर लिया वापस गेंदबाज के हाथ में, गेंद को थमाते हुए। एक और डॉट गेंद 5.2, 31, 1 विकेट के नुकसान पे। हुरैर 12, 9 गेंदों से, और काचरू 16 गेंदें अब तक खेल चुके हैं, 5 रन उन्होंने बनाए हैं। वो इस समय नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे हैं, लेकिन एक धीमी और शांत पारी इस समय चल रही है। दूसरी पारी 154 चाहिए स्काई स्टार बडगाम की टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। अगली गेंद, और इस बार खेला जरूर बैक थ्रू द बॉलर, वहां पीछे खिलाड़ी तेजी के साथ दौड़ पड़े, थ्रो जरूर किया विकेट कीपर के पास, लेकिन उससे पूर्व बड़ी तेजी के साथ ये रन पूरा कर लिए थे दोनों बल्लेबाज। 1 रन और 32, 1 विकेट के नुकसान पे। 5.387 गेंदे, 122 रन अभी भी बना रहे हैं। काफी लंबा सफर यहां से तय करना है स्काई स्टार बडगाम की टीम को। विकेट को सुरक्षित रखना होगा, और सिंगल डबल से जिस प्रकार की इस समय बल्लेबाजी हो रही है बहुत बढ़िया, क्योंकि जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है, हड़बड़ाहट की आवश्यकता नहीं है, कोई अतिरिक्त जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं, और वहीं पे गेंदबाजों को एक सटीक लाइन और लेंथ के साथ वहां पे बल्लेबाज को ललचाना होगा, एक विकेट प्राप्त करनी होगी। फैजान इस ओवर में अगली बार ये गेंद, और इस बार काचरू के लिए अतिरिक्त तो चाल, बल्ला चलाया, संपर्क नहीं हुआ, और पिछले कुछ ओवर से लगातार आदिल काचरू असहजता महसूस कर रहे हैं। वो गेंद की लाइन में आ नहीं पा रहे हैं, वो गेंद की पिच तक पहुंच नहीं रहे, कदमों का इस्तेमाल उनका सही मात्रा में हो नहीं रहा है, जिसके चलते इस समय एक दबाव उन पर जरूर, और वो मानसिक दबाव बढ़ता चला जा रहा है आदिल काचरू पर।
Of course, and you're right, and you rightly mentioned that pressure is mounting, building, and climbing on Adil Kachru. He need to break free, otherwise it will be too late. He has used too many balls for his hot pot 5. He's still in single digits. He's yet to make it to the double figures, and another low score. Will he finish on 5 or below 10? Let us see. But at the moment he's on to 5 of 18 balls. That means he used 3 overs, and he's yet to get off the kind of flyer that he needed and his team needed badly. Nawab, Zaid, Bisma, then we got Munna. These are the beloved viewers on JK Sports Time. Well, this broadcast is brought to you by JK Sports Time in collaboration with its proud sponsors. Next one, flicks it in the gap. This is quality shot. This is beautiful shot off the blade of Adil Kachru. Shapes for that wonderful shot, but find his man in place. Murtaza and others are the part to fly broadcast. And they scamper through for the third one. Good running between the wickets, and now moves on to 8 of 19 balls. Now he's on to 8 of 19 balls, and that brings Hurair Sofi on strike. Hurair is playing really well on to 13 of 10 balls with the help of 2 healthy boundaries. Hurair isn't that much aged. He's also a teenage boy on strike now. 35 for 1 after 6 overs. Mandatory pop play comes to close, and after the completion of 6 overs it is 35 for 1. 154 is the target with 9 wickets in hand. It will be interesting how they will approach the chase and how they will apply themselves. Well, it's up to the 2 batters. They know very well how they read the game and what kind of game awareness they have and they possess. We shall come to know in a while and in next few overs. But at the moment they're 35 for the loss of 1. Target is 154. And you're watching JK Sports Time on YouTube this time around. And the 2 umpires of the match, we got Advocate Hilal and Jangir John. Our proud sponsors: Anthem Sports, India Fashion Fiesta, Shining Star Papur, Amateur Multi-Brand Fashion Store, Agriclan Magam, Just Bukhara, Green Lines Cricket Club, Dulgate Sports Club, and we got Hamdan Hurricanes, importers and exporters back home. Here is the fresh show. Afan one into the attack. Oh, cleaned him up, clean ball, straight away. And look at the celebration from Afan. First ball goes deep in his crease, goes across the line, and again single digit number for Adil Kachru, not the double figures, just below that, shade below that, and he's walking back to pavilion. Now it's 35 for the loss of 2. Straight away on the very first ball he strikes. That follow we get brought to Just Bukhara. लगातार खराब फॉर्म में चल रहे आदिल काचरू और उस खराब फॉर्म को बनाए रखा। एक बार फिर सस्ते में आउट होकर दूसरे विकेट के रूप में मैदान से बाहर जाते हुए, और यहां स्काई स्टार बडगाम को दूसरा झटका लगता हुआ। 35 पे 2, 6.1 ओवर की गेंदबाजी, ये 7वां ओवर, और अब तक की दोनों सफलताएं स्पिन गेंदबाजों के खाते में। पहले अलीम शेख और अब अफान वानी। क्या बढ़िया गेंदबाजी, और स्पिनर्स की जो ये 8 ओवर काफी महत्वपूर्ण है स्काई स्टार बडगाम की टीम के लिए। I agree with your statement, and you're absolutely right. Each and every over from spinner is going to be important. But with the passage of time, asking rate will climb. It's going upwards at the moment. There is a huge increase, not a slight increase. It's increasing abruptly, and it's going upwards at the moment. Here is the fresh ball from Afan Wani to Yasin Butt. And Butt plays it onto the offside. Compact shot on that occasion. Head still. Nice possession of the body and no run on that occasion. Here is Afan again with that slingy action, side arm action. Bit difficult to read him, and this time he works it away and places it in the gap, and no chance for the fielder inside 30 yard. And it was the fielder, a sweeper of cover, who sent us in a good return, but none before. 1 more run added. Hurair Sofi on strike. He's on to 13 of 10 balls. 36 पे 2, 6.3 अफान वानी सफल गेंदबाज। अब तक 1 विकेट उनको मिल चुकी है इस ओवर में। ये गेंद और इस बार लेग स्टंप की शेप में ऑन साइड में रोकेला उसको तेजी के साथ वहां पर फील्डर दौड़ पड़े, फील्ड तो कर लिया, 1 रन जरूर मिला वहां दोनों बल्लेबाजों को। 37 पे 2, 6.4 ओवर की गेंदबाजी। हुरैर 14 11 गेंदों से, यासीन बट 1-2 गेंद से, और अभी भी 117 रनों की आवश्यकता। ऐसे में
यासीन भट्ट सामने ये गेंद, और इस बार लेग स्टंप की शेप में उसको बढ़िया तरीके से फ्लिक किया, गेंद सीमा रेखा से बाहर। अंपायर का निर्णय 6 रनों का जस्ट बोखारा छक्का। और क्या बढ़िया ये स्ट्रोक था, हालांकि ताकत ज्यादा स्ट्रोक में नहीं थी लेकिन टाइमिंग बेहतरीन थी, प्लेसमेंट बेहतरीन थी और गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर, छक्का। और 43 2 विकेट के नुकसान पे 6.5। यासीन भट्ट एक बहुत बढ़िया बल्लेबाज और पिछले मुकाबले में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन पारी उन्होंने खेली थी और आज भी उसी प्रकार की पारी की आवश्यकता जब दबाव में टीम है। 2 विकेट आदिल गुलडान और आदिल काचरू जो कि प्रारंभिक जोड़ी के रूप में आए थे, दोनों बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। यासीन भट्ट अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। आफान वानी गेंदबाज, कुल योग 43 2 विकेट के नुकसान पे आखिरी गेंद, और इस बार यासीन ने फिर उठाया एक और बड़ा स्ट्रोक और एक बार फिर गेंद मैदान से बाहर, जस्ट बोखारा छक्का। वो अंदाज एडवोकेट हिलाल का, और इस जस्ट बोखारा छक्के के साथ ओवर 20 समाप्त, 7 के बाद 49। Two beautiful shots and desired result, and he's got a desired distance, and that one you call it in Hindi Gagan Chumi. It's like that. And why you call it Gagan? What does Gagan mean? देखिए जब आसमान की ओर जमीन गेंद उड़ती है तो निश्चित तौर पे वो गगन की ओर ऐसा दिखाई दे रहा है कि गगन को चुमती हुई, और ऐसे में You mean Gagan is sky and Chumna means kissing sky. जी बिल्कुल, touching, about touching. उसी प्रकार का स्ट्रोक खेला और निश्चित तौर पे ये बड़ा स्ट्रोक था। और यासीन को देखिए जो बाकी शब्द हैं उनका हम लगातार यह चर्चा जरूर करेंगे अपने कमेंट्री बॉक्स में कि किस प्रकार के स्ट्रोक है और जो नए नए नाम दिए गए हैं स्ट्रोक्स को, वो अलग बात। लेकिन यासीन जिस प्रकार की बल्लेबाजी करें, बिल्कुल भी वहां पे कोई ऊर्जा का संचार नहीं किया, बड़े मतलब अद्भुत अंदाज से उन्होंने इस गेंद को सीमा रेखा से बाहर निकाला। That was really nice, and that was a classy off the back foot, and there was, you're talking of the placement, footwork, and not enough power, but timing and footwork, and the placement was really really there, and that was nice. And that just saw the ball whipped away in a blink like this, and we do like we see the twinkling of stars in like that in no time, and it was electric quick and ball gone past everyone. And here is the next one. Oh, what a shot, riding on the bounce, scare cut, but finds man in place. He stops the ball and no run there. That was a good connection. That was a solid shot from Horair Sofi. 49 for 2, chasing 154. They are still 105 more runs behind. The required rate is 8.18 an hour, and they require this rate. They need to maintain this and attain it. Here is the next one from Faizan Roof. Pace straight away after that over of Afan Wani, and captain knows that these two are really playing spin very well here. They are getting enough time in the ball to look after each and every spin bowler and their variety they're using. But 50 is on the board. 50 comes up in over number 8 with 2 wickets down. 104 runs needed in remaining 12 overs. Faizan goes and bows down the leg side. It is wide call from umpire. Extra run added. Faizan bowled a wide delivery. It's 51 for 2. He's having a word with the strike umpire there, and umpire responds quickly, and it is 51 for 2 now. Need to re-bowl that one. Little an iota of difference, and down the leg side, and you know the outcome, it's wide. Here is Faizan again. Oh, looks to try that one. He goes back and positions himself, and positioning himself and getting right behind, looks to try the ball on up, but beaten. It was better to get to the pitch of the ball or reach out to the pitch of the ball, but he gone back and behind that delivery. It's better to get right behind or right on top of the ball, but on that occasion, if you wanted to hit the length on a good height, it was better to get to the pitch of the ball and stretch out to it. 51 for 2 after 7.3 over number 8. Faizan Roof runs away from us. Oh, this could be tight one. Could be tight. Up goes the finger.
He traps him with that slower delivery, back of the end slower, and drops pull on his boot there, and right in front, well in front, trapped him, deadwood plum, and he's walking off the field. He knows very well. He puts his head down and couldn't understand that, couldn't read it. In the end, it was the bowler who gets the last love, who has his man. He has taken leaf out of his book and is on his way back to pavilion. He played really well. For a while, he was really playing nice here. He was milking bowlers pretty nicely, but on that occasion it was the bowler who had something special on offer, and he is having no answer. Look at the batter. He's having a word with his counterparts there and telling them that he used the back of the hand slower. He rolled fingers over the ball and I misread that one, and he trapped me, used that ploy, back of the hand slower. But sometimes slower does the trick. It does for bowler there. It worked for him at that occasion when he needed the most. And so it's 51 for the loss of 3. The little partnership curtains down yet again and broken in the end. तीसरा विकेट 7.4 के बाद और कुल योग इस समय 51 पे 3। हुरैर सोफी 15 पे नाबाद, लेकिन यासीन को क्या बेहतरीन गेंद पे फंसाया, स्लोवर का इस्तेमाल किया, बिल्कुल समझ नहीं पाए और स्टंप्स के सामने पाए गए, विकेट मिल गया तीसरा। यहाँ यूनाइटेड इंपोर्ट नगर के गेंदबाजों को 51 पे 3 और फैजान को ये सफलता मिलती हुई 1.4 ओवर 7 रन 1 विकेट। क्या बढ़िया गेंदबाजी, क्या बेहतरीन विश्लेषण। और यूनाइटेड इंपोर्ट्स की टीम दबाव लगातार बना थी। आदिल गुलडान, आदिल काचरू, यासीन भट्ट, ये 3 मान्यता प्राप्त बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। आदिल वानी आए हैं नए बल्लेबाज और वानी अब नंबर 5 पे बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं। इस समय स्थिति 51, 103 रन यहां से बनाने हैं, 8.35 रिकॉर्ड रन रेट। और ऐसे में फैजान ओवर की अगली गेंद लेकर के तैयार आदिल वानी के लिए। 51 फील्डिंग में थोड़ी सी जमावट और अब परिवर्तन, और ऐसे में फैजान तैयार आदिल वानी के लिए। आदिल वानी है तैयार। 51 3 विकेट के नुकसान पर पिछले मुकाबले में अर्धशतक की पारी। यहाँ ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर स्टंप को कवर किया, उसके बाद तिरछे बल्ले के साथ आड़े बल्ले के साथ स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था, सफलता नहीं मिली। गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई विकेट कीपर के दस्ताने में चली गई बगैर किसी रन के। अच्छी गेंदबाजी, आदिल वानी को खाता खोलना है। एक गेंद का सामना किया, 7.5 8वां ओवर 51 पे 3, 20 ओवर का कोटा, 154 चाहिए यहाँ इस मुकाबले को जीतने के लिए स्काई स्टार बडगाम की टीम को। फैजान रऊफ दूसरा ओवर अपने कोटे का 7 रन खर्चे हैं और 1 सफलता उनके नाम, सफल बॉलर अब तक के यूनाइटेड इंपोर्ट्स के। अगली गेंद लेकर के तैयार वानी के लिए। इस बार वानी ने खेला जरूर और लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी तैनात है, मुजम्मिल भी गेंद को फील्ड कर लेंगे। फील्ड तो कर लिया लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। ओवर समाप्त हुआ 8 के बाद 52 पे 3, 102 चाहिए और अभी भी 72 गेंदों का आना बाकी। 72 गेंदों से 102 रन, वर्तमान रन गति 6.50 और रिकॉर्ड रन रेट 8.50। हालांकि रिकॉर्ड रेट की अगर हम बात करें ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ समस्या विकेट की है। लगातार अंतराल से विकेट गिरते चले जा रहे हैं। पहले गुलडान, उसके बाद आदिल काचरू, फिर तीसरे विकेट के रूप में यासीन। और यहाँ नाबाद जोड़ी हुरैर सोफी 15 पे 13 गेंदों से, और उनके साथ अभी अभी आदिल वानी आए हैं जिन्होंने खाता खोला 1 पे नाबाद। हुरैर के लिए नए ओवर की शुरुआत, पारी का 9वां ओवर। पहली गेंद और इस बार बड़ा स्ट्रोक, लेकिन वहां खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पे तैनात है मुजम्मिल, उन्होंने गेंद को सफाई के साथ फील्ड कर लिया। 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ कुल योग बढ़ता हुआ 53 पे पहुंचा। 3 विकेट के नुकसान पे और समझते ओवर समाप्त अब जाकर के हुआ तो 8 ओवर की समाप्ति के बाद 53 पे 3 फैजान की गेंदबाजी का विश्लेषण। 2 ओवर कोई मैडल नहीं, 9 रन 1 विकेट, बढ़िया गेंदबाजी। हुरैर 15-14 गेंदों से, आदिल वानी 1-2 गेंद से। और ऐसे में अब नए ओवर की शुरुआत होगी, पारी का 9वां ओवर। और यहाँ एक और परिवर्तन अब गेंदबाजी में तो देखना होगा। अब गेंदबाजी में साहिल को लेकर के आए हैं और साहिल परिवर्तन के तौर पर जब गेंदबाजी के लिए उतरे हैं तो क्या एक और स्पिन गेंदबाजी का आक्रमण, एक और स्पिन गेंदबाज का प्रयोग, ये कितना महत्वपूर्ण होगा, ये कितना महत्व होगा इस गेंदबाज का इस विकेट पे टीम यूनाइटेड इंपोर्ट्स के लिए, ये देखना होगा। 8 ओवर समाप्त, 53 पे 3, 9वें ओवर की शुरुआत और गेंदबाजी का दायित्व साहिल के पास, जो कि पहला ओवर परिवर्तन के तौर पर पहली गेंद। और इस बार खेला जरूर, अपने फॉलो थ्रो में फील्ड कर लिया, बढ़िया गेंदबाजी। और क्या खूबसूरत गेंदबाजी एक्शन वहां पर इस गेंदबाज का, अंडर आर्म एक्शन, बढ़िया तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं। शुरुआत डॉट से दूसरी गेंद और इस बार ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात, फील्ड गेंद को किया, 1 रन वाला वहां पर मिला आदिल वानी और हुरैर सोफी को। हुरैर सोफी और आदिल वानी लगातार प्रयास करेंगे क्योंकि अब
आदिल वानी स्ट्राइक पे होंगे और कुल योग 54 पे 3, 8.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद हुरैर सोफी ने अब तक 16 रन बनाए हैं 15 गेंदों से, और वही आदिल वानी स्ट्राइक लेने की तैयारी में हैं जिन्होंने अभी तक 2 रन बनाए हैं 4 गेंदों से। 3 विकेट के नुकसान पे 8.2 ओवर की गेंदबाजी, और ऐसे में अगली गेंद लेकर के चले ये गेंद, और इस बार सीधे बल्ले से ऑफ मिडल पे आती हुई गेंद को खेला, मिड ऑफ पे मुजम्मिल पहुंचे, गेंद को फील्ड कर लिया। 1 रन जरूर मिलेगा आदिल वानी और हुरैर सोफी को। 1 रन के साथ कुल योग बढ़ता हुआ 55 पे 3, 8.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद ये पारी का 9वां ओवर, और ऐसे में हुरैर हैं सामने गेंदबाज साहिल के। साहिल अगली गेंद लेकर के इस बार फिर खेला ऑफ साइड में, और लॉन्ग ऑफ से आकर के खिलाड़ी जब तक फील्ड करते गेंद को 1 रन और दोनों बल्लेबाजों के पास, हालांकि दूसरे रन के लिए पलटे थे वहां पर आदिल वानी, मना किया हुरैर ने, केवल 1 रन से संतुष्ट, और 1 रन के साथ 56 पे 3, 8.3 के बाद 56. 3 wickets down in over number 9. Sahil in his very first over, half an over, he bowled and gone for 4 runs. Adil pounces on that one, but there is fielder Uwais, little fumble, and the second run resulted with that fumble. And we got Kashmir the Paradise and Ijaz talking of why you aren't live on Facebook today. Well, we tried our level best to update you via YouTube, and it's a kind of experiment going on. We're testing this one via YouTube, and it's in the air. One more bites the dust, and this time it's Adil Wani. It's big man Adil Wani, consistent batter, is gone, couldn't perform today. One of the strong batters, one of the strong lads from Sky Star, Packet, sent back to pavilion, 5 balls, and what a timely breakthrough for Team United Imports and Sahil. What a strike, and he strikes in his very first ever, and that too Adil Wani is gone. Now pressure will be on Sky Star Budgam. Well, they lost to their able man Mr. Adil Wani against the likes of Sahil. That was well held by Faizan Roof at long off. Good catch in the end. Nazir for 59 for the loss of 4. लगातार विकेट्स गिरते चले जा रहे हैं, समस्या है, दिक्कत है, और दबाव इस समय साफ दिखाई देता हुआ स्काई स्टार बडगाम के बल्लेबाजों पर। हालांकि आसिफ मंजूर अब मैदान में प्रवेश कर रहे हैं हुरैर सोफी के साथ, वे अब मिलकर के किस प्रकार की पारी खेलेंगे ये देखना होगा। हुरैर सोफी 17 पे नाबाद 16 गेंदों से, आसिफ मंजूर अभी अभी आए हैं यहाँ खाता खोलने के लिए आदिल वानी के स्थान पर। 59 पे 4, 9 ओवर पूरे, 11 ओवर का खेल बचा है, 66 गेंदों से अभी भी 97 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। 6.56 वर्तमान रन गति, 8.54 रिक्वायर्ड रन रेट, और ऐसे में तैयार हुरैर सामना करने के लिए मुजम्मिल का। मुजम्मिल फेरोज जो कि अब परिवर्तन के तौर पर गेंदबाजी करेंगे, एक और स्पिन गेंदबाज, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी उन्होंने की है इससे पूर्व मुकाबलों में, लेकिन आज उसी प्रकार का प्रदर्शन करना होगा। और उनके सामने अब 2 मंजे हुए बल्लेबाज, हालांकि हुरैर सोफी सेट बैटर हैं, और आसिफ मंसूर जो कि एक दिग्गज ऑलराउंडर है, एक बेहतरीन क्रिकेटर है जहां तक स्काई स्टार बडगाम की टीम का सवाल है। मुजम्मिल फेरोज ने ओवर की शुरुआत करने जा रहे हैं। पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा होगा, जी हाँ ये वाइड का इशारा, और अतिरिक्त के साथ ही कुल जोक बढ़ता हुआ 60 पे 4, 9 ओवर पूरे, 10वें ओवर की शुरुआत हो चली है, और अभी तक 60 रन बन चुके हैं। 4 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए हैं स्काई स्टार बडगाम की टीम ने। 153 बनाए थे निर्धारित, 20वें ओवर में पूरी टीम सिमटी थी, और 154 रनों का विजयी लक्ष्य है स्काई स्टार बडगाम के सामने ये गेंद। और इस बार सीधे बल्ले से खूबसूरत स्ट्रोक है ये, मिडिल ऑफ द बैट से आत्मविश्वास वाला स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ पे वहां खिलाड़ी तैनात, फील्ड हुई, 1 रन जरूर मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को, और 1 रन के साथ ही कुल योग 61 पे पहुंचा। 4 विकेट के नुकसान पे 9.1 ओवर की गेंदबाजी, और मुजम्मिल के पास बहुत सारी विविधताएं हैं, और वो कुछ परिवर्तन अपनी गेंदबाजी में कर सकते हैं, वो मिश्रण कर सकते हैं, वो जानते हैं मिश्रण करना, लेकिन जहां आसिफ मंजूर पे दबाव जरूर होगा क्योंकि 4 विकेट उनकी टीम गंवा चुकी है, और ऐसे में वो अब पहली बार सामना करने के लिए तैयार मुजम्मिल की ये गेंद, और मंजूर के लिए इस बार हल्के हाथों के साथ तिरछे बल्ले के साथ दिशा दे दी थी ऑफ साइड में, वहां पे फंबल हुआ, और 1 रन जरूर खाता खोल लिया आसिफ मंजूर ने। 62 पे 4, 9.2 के बाद 10वां ओवर, आधी पारी समाप्त होने को है, और लगभग 4 विकेट अब तक टीम गंवा चुकी है स्काई स्टार बडगाम की यूनाइटेड इंपोर्ट श्रीनगर के विरुद्ध।
10वां ओवर मुजम्मिल फेरोज अब तक 3 रन उन्हें खर्चे, 2 गेंदें अभी तक वे फेंक चुका है और इस बार हुरैर सोफियों के सामने जो कि 18 पे नाबाद है 17 गेंदों से। मुजम्मिल पारी का 10वां ओवर यूनाइटेड इंपोर्ट श्रीनगर की ओर से और ये कश्मीर क्रिकेट लीग चंडीगढ़ 2023-24 वर्ष के अंतर्गत प्रतियोगिता सफल आयोजन पूल डी का अंतिम लीग मुकाबला कल इसी मैदान पे अंतिम और चौथा निर्णायक क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाना है इन्हीं दो टीमों के बीच, यानी कि यूनाइटेड इंपोर्ट श्रीनगर और स्काई स्टार बडगाम। और उसका भी सीधा प्रसारण आप तक अवश्य पहुंचेगा जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। इस बार जेके स्पोर्ट्स टाइम के यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का। अपना समर्थन, अपना प्यार, अपने विचार देने के लिए, अपना सुझाव देने के लिए बने रहिए, इसी प्रकार से आनंद लेते रहिए और जेके स्पोर्ट्स टाइम हर संभव प्रयास आप तक करता हुआ बेहतर से बेहतर प्रसारण लेकर के पहुंचने का। 62 पे 4, 9.2। अगली गेंद मुजम्मिल की सामने हुरैर अथवा आसिफ मंजूर, जी हाँ आसिफ मंजूर पर कलाइयों के सहारे खेला जरूर और वहाँ लॉन्ग ऑफ से जाकर के खिलाड़ी ने जब तक गेंद को फील्ड किया 1 रन और आसिफ मंजूर के खाते में वे 2 पे पहुंच गए। 2 गेंदों से 64 पे 4, 9.4 के बाद 64 for the loss of 4. We are in over number 10. It's a 20 over game. We have 10 more overs remaining after this one. In total we have 62 balls coming up and remaining. Outside edge, but will go past everyone in a flash. Electric quick, outside edge found and races away. And no one can believe that, but that has gone like a trace bullet. That too up the outside edge. He opened at the bat face and it flies and flies away, and it flew, to be precise, down to his third man, past everyone, and just Bukhara 4 takes it to 68 for the loss of 4. Nothing wrong with the ball there from Muzammil Feroz. He opened at the bat face and eluding that flies the fielder down to his third man, and it earned him a boundary. Hurer on to 23 of 19. Oh, that's another cracking shot, but straight to fielder Sile. No run on that occasion. That was driven handsomely, but finest man in place. This broadcast is coming your way by virtue of our proud sponsors, Anthem Sports India, Fashion Feast, the shining star pump, or MHM multi-brand fashion store, Agri Clan Magam, or MHM by Rafi Wani. Then we have Just Bukhara, Green Lioness Cricket Club. The man behind Green Lioness, Pirzada Faizan, young, jolly type guy. Then we got Hamdan Hurricanes, Janif Hafiz, down-to-earth person behind Hamdans, the importers and the exporters in the valley. Then moving on to Delgate Sports Club, all talented lads in their lineup are backing the live broadcast, and it is only possible because of proud sponsors. Score is 68 for the loss of 4 after 10 overs, halfway mark. Half the job is done, and halfway stage, halfway mark. 4 down, 68 runs on the board, and they still require 86 more runs to win this one from remaining 10 overs. First 10 overs, it took them 60 balls to get there, to get to 68, and they lost 4 wickets in the process in making it to 68. But on the other side, they require 86 more runs with 6 in hand, and at the rate of 8.60 in remaining 59 balls. Well, the asking rate will increase here for Paul Dot, Asif Maras, and he's also lacking confidence here in the tournament. He also need a performance that will not only boost him, and that will give his other batters a kind of belief, and a belief that we have Asif to fire. They're in the lineup because tomorrow's match, today they can take it for granted, but the next encounter that will be played tomorrow early in the morning, that will matter the most, because that is the quarter final, the last quarter final, the fourth one. 69 for 4. We are in over number 11. Sidearm action will trap him easily, and Hurer is gone. Sidearm action, slingy, cross seam bowling, and he gets his man again. It's 69 for the loss of 5, and Hurer is gone. Set batter departs on to 23 of 21 balls. In the end, ended up his great knock with a scratchy approach, and he's walking off the field. 69 for the loss of 5.
69 पे 5, 10.3 ओवर की गेंदबाजी, एक और विकेट का पतन। इस बार हुरैर सोफी आउट होकर पवेलियन लौटे। आसिफ मंजूर अभी भी नाबाद हैं 3 पे और वहाँ पे पवेलियन से नबदार हुए एक और बल्लेबाज। अब धीरे धीरे से मैदान की ओर समझते फैसल डार, और फैसल डार अब आए हैं तो एक और आक्रामक शैली के बल्लेबाज हैं। आसिफ मंजूर के साथ वे अब किस प्रकार का सहयोग देंगे, किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे। यहाँ आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है। 10.3 ओवर, 69 पे 5। स्काई स्टार बडगाम सितारों से सजी मजबूत दाकड़ता उनकी बल्लेबाजी में, लेकिन आज पूरी तरह से गेंदबाजों ने अस्त व्यस्त कर दिया। पूरी तरह से उनकी बल्लेबाजी को पिछाड़ के रख दिया है गेंदबाजों ने। यहाँ स्पिन गेंदबाजी काफी महत्वपूर्ण, और ऐसे में दूर वाले छोर से साहिल एक बार फिर 1.3 ओवर 7 रन 2 विकेट। क्या बेहतरीन गेंदबाजी, नसरी एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। सामने हो गए फैसल डार 0 पे। कुल योग 69, 5 विकेट के नुकसान पर 11वां ओवर। ये गेंद और इस बार खेला जरूर ऑफ साइड में, वहां पर प्रयास असफल हुआ। तेजी के साथ 1 रन पूरा कर लिया और केवल 1 रन से ही संतुष्ट रहेंगे। खाता खोल लिया फैसल डार ने। वे 1 पे पहुंचे। कुल योग 70, 5 विकेट के नुकसान पे 10.4 ओवर की गेंदबाजी। टंगोरी बनूर चंडीगढ़ का ये खूबसूरत मैदान, जहां कश्मीर क्रिकेट लीग का चौथा सत्र 2023-24 वर्ष के अंतर्गत खेला जा रहा है। इस बार फिर अपने फॉलो थ्रो में फील्ड करने का प्रयास, लॉन्ग ऑफ पे गेंद चली गई, छिटकी और अब सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए यहाँ मिस फील्ड का नतीजा, जस्ट बोखारा चौका। तो 74 पे 5, 10.5 के बाद पारी का ये 11वां ओवर। आसिफ मंजूर 7 पे 5 गेंदों से, फैसल डार एक गेंद से, और ऐसे में साहिल अपना दूसरा ओवर पूरा करने जा रहे हैं। 1.5 ओवर 12 रन 2 विकेट। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, और आप कल्पना कर सकते हैं ना पितुले कसी हुई गेंदबाजी। इस बार फिर अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करने का असफल प्रयास, लेकिन लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी बिल्कुल सीमा रेखा के अंदर 1-2 कदम उन्होंने गेंद को रोका, फील्ड करके थ्रो किया, लेकिन उससे पूर्व 1 रन और ओवर भी समाप्त। 11 के बाद 75 पे 5। 54 balls and equation is 79 of 54. And talking of asking grade, it is 8.78 an hour. Just 5 wickets in kitty. Now have this side back to pavilion, but 2 strong lads, experience come class, in one frame at the moment. Why I call it one frame? Because we have a strike batter and the other side it's the non-striker. It's the one frame, the one possible angle we are showing you, and we are talking about the same angle. We have 2 men on screen at the moment, and these 2 batters are gonna hold the key for their side. As long as they stay there, their hopes are alive. Sky Star is alive in this match. Well, they're almost alive in the tournament. Tomorrow this match will decide which one will go through. Asimas pulls that one and pulls well, will get a boundary for it. He came back quickly and then pulls it away, underarm pull, and it was hit with tremendous energy and power, and there wasn't anyone in that portion of scare leg area. There was one, but he was almost behind scare on onside, so it wasn't easy for Owas Razak to go across and stop the ball, because it was travelling at a good pace. There was enough power behind that shot to beat the man. Here is Alim again a lower trajectory delivery of lower trajectory again. It was tad low, it capped low. Well, this is a ploy from Alim Sheikh. He is using that lower trajectory and the slowness of the deck to a great extent, and he is using that tad lower line here to tease the batter, and he has been quite successful in doing that over past 2 days. Here he is again, 80 for the loss of 5, and Faisal without any foot movement, and could be tight on the other side, but throw comes at the strike end, so no harm done. Another run at it. It's 81 for the loss of 5. 11.3 81 5 विकेट के नुकसान पर 3 गेंदें बची। आसिफ मंजूर 13 पे 8 गेंदों से, फैसल डार 2 गेंदों से, लेकिन इस बार आलिम शेख के सामने आसिफ मंजूर हो गए। आलिम शेख 2.3 ओवर 18 रन 1 विकेट। इस बार बड़ा स्ट्रोक लॉन्ग ऑन पे, लेकिन वहां खिलाड़ी तैनात हैं। केवल 1 रन मिलेगा आसिफ मंजूर को, और 1 रन के साथ उनकी व्यक्तिगत रन संख्या 14 पे पहुंची 9 गेंदों से। कुल चौक स्काई स्टार बडगाम का 82 5 विकेट के नुकसान पे 11.4 ओवर की गेंदबाजी। आलिम शेख इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, और ये उनके कोटे का तीसरा ओवर। वहीं पे यूनाइटेड एम्पोशी नगर की पारी के लिए ये
12वां ओवर। इस बार फिर खेला ऑन साइड में, लेकिन इस बार रन नहीं मिलेगा फैसल डार को, डॉट के साथ संतुष्ट रहना पड़ेगा। 82 पे 5, 11.5 के बाद आखिरी गेंद 12वें ओवर की फैसल डार के लिए आलिम शेख। कुल मिलाकर अच्छा ओवर, एक चौका और 3 सिंगल, 7 रन अभी तक आए हैं आखिरी गेंद। और इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, विकेट कीपर भी चौके, गेंद सीमा रेखा की ओर, लेकिन उस ओर खिलाड़ी पहुंचे और पलटकर तेजी के साथ दूसरा रन भी पूरा कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। 2 रन और 9 रन ओवर से आए। ओवर हुआ समाप्त 12 के बाद 84 पे 5। 12 overs done, 84, and now they require, I think, 70 runs. Yeah, exactly, 70 needed in 48 balls, and the asking rate is 8.75. It is still within reach, not a big concern. If you look at the number of runs they require per over, around 9 and over now, but still gettable, still possible, not something like that we call impossible. And it's mission very possible and very much in the game. They're in the hunt, they're in the chase, with a solid pair in the middle, having the likes of Asif Maras and Faisal Dar. Well, Maras and Dar, if they get together, if they can bat till over number 16, I will put my money on Sky Star Budgam, because I believe these two will find the areas where they can manipulate, where they can concentrate, and I believe they will be fetching boundaries and runs at regular intervals. Well, then it's 84 for the loss of 5 after 12. Over number 13 is about to start, about to begin. Who's gonna bowl that? It's going to be Muzammil Feroz from Nursery. 1 over none for 9. Full toss in the gap. Big chase for man. Will he stop the ball? He does well. Good stop made by field, but not before the two batters scamper through. So 2 runs added, change in the field on offside. Muzammil brings Sahil bit close to extra cover. Now he goes back to his original position on edge of the circle again. Almost extra cover now. Here is Muzammil again. Good delivery. Batter line this time. Tight one. And close to batter. And batter goes little forward and plays it back to the bowler. Head still. Body in good position. And then batter and pad close together. I can call it, he blocked it in the end. Here is Muzammil. 86 on the board. Yet again. Can't do very much. Couldn't do very much. Again plays back along the track, not for runs, a dot. 86 पे 5, 12.5 और अभी भी एक गेंद का आना बाकी। ये 13वां ओवर पारी का चल रहा है और आसिफ मंजूर 16 पे नबाद है, 4 पे नबाद फैसल डार। ये जोड़ी काफी महत्वपूर्ण होगी स्काई स्टार बडगाम के लिए। इस बार हल्के हाथों के साथ पैड लाइन पे फेंकी हुई गेंद ऑन साइड में बड़ा तेजी के साथ 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए पलटना चाहते थे आसिफ मंजूर, लेकिन मना किया फैसल डार ने। एक के बाद ओवर भी समाप्त हुआ और ऐसे में समझते अभी भी 2 गेंदों का आना बाकी, क्षमा कीजिएगा। 12.4, 87 पे 5 और अभी भी 2 गेंदें बची हैं इस ओवर की। जहां तक मुजम्मिल फेरोज का सवाल, 1.4 ओवर में 12 रन, उन्हें सफलता नहीं मिली है। नपीतुली कसवी गेंदबाजी, लेकिन विकेट लेने से वो अभी तक कासिर रहे हैं क्योंकि अब तक उनको विकेट नहीं मिला है ये गेंद। और इस बार फिर बढ़िया गेंद मिडल स्टंप पे खेला जरूर, चहलकदमी करते हुए गेंद लॉन्ग ऑन पे चली गई है। 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। आसिफ मंजूर के पास स्ट्राइक रहेगी 88 पे 5, 12.5 ओवर की गेंदबाजी और अभी भी 1 गेंद का आना बाकी। आसिफ मंजूर 13 गेंदों से 5 पे नबाद है फैसल डार और फैसल डार में क्षमता है बड़े स्ट्रोक खेलने की। आसिफ मंजूर भी एक दिग्गज खिलाड़ी है, एक बेहतरीन अनुभवी खिलाड़ी है और वो परिस्थितियों को जानते हुए परिस्थितियों के अनुकूल बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार लेग स्टंप पर ये गेंद वाइड होगी। जी हाँ, एक अतिरिक्त रन के साथ अतिरिक्त गेंद फेंकनी पड़ेगी मुजम्मिल को और 1 रन के साथ ही कुछ जो आगे बढ़ता हुआ इस समय 89 पे पहुंच चुका है 5 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद 13वें ओवर की। ऐसे में आखिरी गेंद लेकर के मुजम्मिल फेरोज 14 रन खर्चे अपने 1.5 ओवर्स में, विकेट उन्हें मिला नहीं आसिफ मंजूर के लिए। ये गेंद इस बार ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, स्क्वायर लेग की और हल्के थोड़ा सा वाइड डिशर। 1 रन पूरा कर रहे हैं, तेजी के साथ पलटकर दूसरे रन के लिए आ रहे हैं। अच्छी रणनीति वहां पर दोनों बल्लेबाजों के। 2 रन और खाते में जुड़े और ऐसे में ओवर भी समाप्त 13 के बाद 91 पे 5। Sam score. Look at the figures.
if we compare. It was 91 for the loss of 5 after 13. It is 91 for the loss of 5 after 13. Sam scores. In inning number 1, we saw the other side. It was United Imports. They were 5 down, 91 after 13 overs. 7 and over, just shade over that. And now the Sam thing is happening with Sky Star Budgam. Evenly poised encounter. Well then, from here on, who will win this one and who will put up a show? Let's find it out. And which side you will be eyeing, and you would want to go over the line. Do write to us and do drop your comments. It is 91 for the loss of 5, but the situation is Sam. Likewise, we witnessed it in inning number 1. But after that, there was a great transformation. And the later part of innings, we saw the later order or the down the other batters stitched runs, and they fetched 63 out of 6 overs, because they were bundled out on 19.3 or 19.2, around that. Here is Alim, and he plays it back along the track straight towards long on. A single is all he's gonna get here. Faisal Dar, he's a big hitter of cricket ball, and he gets in possession, trying to lift it up, but couldn't do very much with that one. There wasn't enough light. The next one, it is flighted and belted past umpire, straight into the side screen. Runs 4 of them, and look at Advocate Hilal. The strike umpire is down on the field. He's having a word with the umpire, the batter there, and I think he's telling him, don't you see the other parts of the field? You have got enough areas. Why looking at me? What I have done to you? Well, these things are going on at the moment, but this is just the fun. And these are the funny comments. Atif Ejaz, Shah Faizu, then Yunus Ali and Sheikh Zaid. Thank you very much. And that just Bukhara 4 takes you to 96 for 5. And is Alim Sheikh here to strike again? Will he get one more wicket here? There is a shot for LBW. There is a shot for LBW and turned down by umpire. He believed that there was glow, and it came off the glow and then hitting the pad. So benefit of doubt, and a good decision from umpire Advocate. 96 for 5, halfway back in over number 14. Here is Alim again to Asim Maras. Where is this one going? Goes for the sweep again. There is appeal. There is huge appeal for LBW and turned down yet again. And a leg by signal, appeal and appeal. But umpire isn't going to entertain any appeal here. And another run added. It's 97 off the leg buys for the loss of 5. 97 5 विकेट के नुकसान पे 13.4 ओवर की गेंदबाजी। 14वां ओवर आलिम शेख का अपना कोटा पूरा करने जा रहे हैं। 26 रन देकर के 1 विकेट 3.4 ओवर में। सामने है फैसल डार 6 पे। इस बार फुल टॉस, लेकिन पूरी तरह से गेंद बल्ले पे आई नहीं, ऑफ साइड में चली गई। जब तक लॉन्ग ऑफ, वाइडिश लॉन्ग ऑफ से गेंद को फील्ड किया जाता। 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ ही कुल योग बढ़ता हुआ 98 5 विकेट के नुकसान पे 13.5 ओवर की गेंदबाजी। 14वां ओवर, आखिरी गेंद का आना बाकी। ऐसे में सामने होंगे आसिफ मंसूर। 23 पर आवाज 17 गेंदों से आलिम शेख आखिरी गेंद देकर के अपने कोटे की, और इस बार पैड पे टकराई, लेकिन एक बार फिर जोरदार अपील। अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं, स्वीकार नहीं किया, और ऐसे में ओवर भी समाप्त। 14 ओवर की समाप्ति के बाद 98 5 विकेट के नुकसान पर अभी भी 6 ओवर का आना बाकी, यानी कि निर्धारित 36 गेंदें बची हैं। 8.83 रिक्वायर्ड रन रेट, और 36 गेंदों से 56 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। आसिफ मंसूर और फैसल डार बीच मैदान में, ये जोड़ी बीच मैदान में प्रयास करेगी यहाँ से। ये अंतिम लीग मुकाबला पूल डी का, कश्मीर क्रिकेट लीग चंडीगढ़ 2023-24 वर्ष के अंतर्गत चौथा सत्र पूल डी का अंतिम मुकाबला। 19.3 ओवर में आज पारी सिमटी थी यूनाइटेड इंपोर्ट श्रीनगर की, जिन्हें आमंत्रित किया गया था। स्काई स्टार ने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी के लिए 153 रनों ने बनाए। 154 रनों का विजयी लक्ष्य, और उसका पीछा करने उतरी। लगातार दबाव में टीम दिखी। शुरुआत से लगातार अंतराल के बाद विकेट गिरते चले गए। आदिल गुलडान, उसके बाद जो उनके साथी खिलाड़ी आदिल काचरो, फिर यासीन बाट, उसके बाद हुरैर सोफी, लगातार एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। आदिल वानी 5वें विकेट के रूप में मैदान से बाहर गए, और जहां आसिफ मंसूर और फैसल डार लगातार प्रयास कर रहे हैं इस पारी को अंत तक ले जाने का, इस पारी को अंत तक जीत के साथ समाप्त करने का, और वो कल नए इरादों के साथ, एक पॉजिटिव सोच के साथ उतरेंगे, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उतरेंगे, क्योंकि इसी टीम के विरुद्ध उनका जो है वो क्वार्टर फाइनल मुकाबला होना है इसी मैदान पे। कल
हालांकि नियुक्त समय 9:30 का है और हम आप तक जरूर पहुंचेंगे जब मुकाबला प्रारंभ होगा। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, अंदरूनी सिरा लेने के बाद गेंद वही पास में लुढ़की, फील्ड हुई विकेट कीपर द्वारा बगैर किसी रन के। 98 पे 5, 14.1, 9.60 पे रिक्वायर्ड रन रेट पहुंच चुका है। 35 गेंदें, 56 रनों की आवश्यकता। फैसल डार 7, 8 गेंदों से। आसिफ मंजूर 23, 18 गेंदों से। और ऐसे में गेंदबाजी मुजम्मिल फेरोज के पास 2.1 ओवर 16 रन। तीसरा ओवर कोटे का फेंक रहे हैं ये गेंद और इस बार सीधे बल्ले से खेला और लॉन्ग ऑन से आकर के खिलाड़ी जब तक इस घेरे के अंदर यानी कि मिड ऑफ क्षेत्र पे पहुंचे, वहां मिड ऑन पे पहुंचे, क्षमा कीजिएगा, वहां गेंद को फील्ड किया और 1 रन जरूर मिला। वहां फैसल डार को वे 8 में पहुंचे 9 गेंदों से। आसिफ मंजूर 23 पे सामना करने के लिए तैयार मुजम्मिल फेरोज की अगली गेंद का। 99 पे 5, 14.2, 15वां ओवर पारी का। 9.71 रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन दो दिग्गज खिलाड़ी और जब तक वे बने रहेंगे आशाएं बनी रहेंगी स्काई स्टार की टीम को, उनके दर्शकों को, उनके चाहने वालों को, उनके समर्थकों को। ऐसे में मुजम्मिल अगली गेंद आसिफ मंजूर के लिए स्टंप को कवर किया। इस बार लेग स्टंप पर ये थोड़ी सी दिशाहीन गेंद जरूर थी, खेलना चाहते थे, गेंद ठीक तरीके से बल्ले पे नहीं आई, दिशाहीन थ्रो वहां पर बैक का पीछे खिलाड़ी कर रहे हैं, थ्रो जरूर किया विकेट कीपर के पास, लेकिन तेजी के साथ दूसरा रन भी पूरा कर लिया। तालमेल का परिचय देते हुए दोनों बल्लेबाजों ने ये 2 रन बटोर लिए और 2 रनों के साथ 100 रन पूरे होते हुए स्काई स्टार बडगाम के 101 पे 5, 53 चाहिए, 33 गेंदें बची है। आसिफ मंजूर 25 पे 19 गेंदों से मुजम्मिल फेरोज के इस ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। मुजम्मिल फेरोज दूर वाले छोर से आसिफ मंजूर के लिए और इस बार स्टंप को कवर किया, बेहतरीन तेज तरार स्ट्रोक, बैक थ्रू द बॉलर और गेंद पलक झपकते ही सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। स्ट्रेट ड्राइव, खूबसूरत स्ट्रोक और 4 रन अर्जित किया अपने लिए, अपनी टीम के लिए। जस्ट बोकारा चौका और इस चौके के साथ 105 कुल चौक, 5 विकेट के नुकसान पर 14.4 और आसिफ मंजूर इस चौके के साथ 29 पे पहुंचे 20 गेंदों से। 49 चाहिए, 32 गेंदें बची हैं। मुजम्मिल अगली गेंद लेकर के आसिफ मंजूर के लिए इस बार बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप पर खेलना चाहते थे, हालांकि गेंद टिप्पा खाने के बाद हल्का सा वहां पे मूवमेंट देखने को मिला, बाहर की ओर सरकी, वो कांटा बदला गेंद ने और सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में चली गई बगैर किसी रन के। धन्यवाद सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जेके स्पोर्ट्स टाइम के यूट्यूब चैनल से हम आपके साथ इस सीधे प्रसारण में बने हुए हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये गेंद और इस बार लेग साइड में फ्लिक किया, ये देखते खिलाड़ी काफी पीछे, जब तक वे गेंद को फील्ड करते 1 रन जरूर मिला। वहां आसिफ मंजूर को वे 30 पे पहुंचे 22 गेंदों से। 106 पे 5 ओवर समाप्त, 15 के बाद 106 रन बना लिए हैं और अब 30 गेंदों से 48 चाहिए, 5 विकेट सुरक्षित। मुजम्मिल फेरोज 3 ओवर कोई मेडल नहीं, 24 रन कोई सफलता नहीं, 22 गेंदों से 30। आसिफ मंजूर की बढ़िया पारी, सेंसिबल पारी, ऐसे समय में जबकि टीम को आवश्यकता थी। शेख शाहिद, मुर्तजा डार, यूनुस अली और शाफ फैजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार विचार देने के लिए। और अभी भी 5 ओवर का आना बाकी, 9.60 इसमें रिक्वायर्ड रन रेट है, यानी कि आखिरी 30 गेंदें बची हैं, 48 रन चाहिए यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए स्काई स्टार बडगाम की टीम को। और वहीं पे न सिर्फ रन गति पे अंकुश लगाना है बल्कि विकेट चटकाने होंगे, यहां से साझेदारी को तोड़ना अवश्य हो गया है यूनाइटेड इम्पोर्ट श्रीनगर की टीम के लिए, उनके गेंदबाजों के लिए, क्योंकि ये साझेदारी धीरे धीरे से एक चिंता का विषय बनती हुई यूनाइटेड इम्पोर्ट्स की टीम और उनके गेंदबाजों के लिए। नए ओवर की शुरुआत साहिल को लेकर के आए हैं दूसरे स्पेल में, 2 ओवर 13 रन 2 विकेट और तीसरा ओवर प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहली गेंद मंजूर के लिए और इस बार आसिफ मंजूर बैकफुट पर गए, जगह बना रहे थे, स्ट्रोक खेला जरूर, लेकिन अंदरूनी किनारे से लगने के बाद बल्ले के गेंद वापस आई, गेंदबाज के पास फील्ड कर लिया बगैर किसी रन के। 106 पे 5, 15.1 ओवर की गेंदबाजी, ये 16वां ओवर। अगली गेंद और इस बार लेग स्टंप पर खेला जरूर, ऑन साइड में गेंद, वहां पर खिलाड़ी तैनात थे, उन्होंने गेंद को फील्ड तो कर दिया लेकिन रन मिला नहीं। 2 डॉट गेंदें लगातार, 2 गेंदों से रन नहीं आया है। आसिफ मंजूर 30-24 गेंदों से 106 पे 5, 15.2 अगली गेंद लेकर के और इस बार आसिफ मंजूर फिर बैक पर गए, खेला जरूर ऑफ साइड में, वहां पर खिलाड़ी तैनात, थ्रो किया लेकिन स्टंप्स पे नहीं लगा, नजदीकी मामला हो सकता था। बाल बमुश्किल बचे आसिफ मंजूर, 1 रन जरूर और अतिरिक्त जोखिम अब उठाते हुए, क्योंकि जानते हैं कितना महत्व है यहाँ इस मुकाबले को जीतने के लिए। वो जीत की भूख इस समय आसिफ मंजूर के पास नजर आती हुई, उस जीत की भूख को मिटाने का प्रयास, रनों की भूख आसिफ मंजूर के पास। बढ़िया प्रदर्शन आसिफ मंजूर का। फैसल डार है सामने 8 पे 9 गेंदों से 107 पे 5, 15.3 अगली गेंद
साहिल की, और इस बार फिर लेग स्टंप पर खेला जरूर, लेकिन अपने ही फॉलो थ्रू में फील्ड कर लिया, रन मिला नहीं, यहाँ डॉट के साथ संतुष्ट। बढ़िया ओवर 4 गेंदों से मात्र 1 रन, 107 पे 5, 15.4, 26 गेंदे अभी भी शेष है। 10.85 पे आस्किंग रेट पहुंच चुका है। इस बार बड़ा स्ट्रोक और गेंद हवाई यात्रा पे बेच दी, लॉन्ग ऑन के ऊपर, सीमा रेखा से बाहर, जस्ट बोकारा छक्का। इस छक्के के साथ 113 पे 5 फैसल डार के बल्ले से निकलने वाला ये बढ़िया स्ट्रोक, और वे पहुंच गए दोहरे अंकों में। 11 गेंदों से 14 पे नाबाद है फैसल डार। आसिफ मंजूर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे 31 पे खड़े हैं 25 गेंदों से। साहिल 2.5 ओवर 20 रन, 2 विकेट, 15.5 ओवर की गेंदबाजी, और 113 पे 5, 9.84 का रिक्वायर्ड रन रेट, 25 गेंदे, 41 रनों की आवश्यकता। ये आखिरी गेंद होगी 16वें ओवर की, और उसके बाद 4 ओवर का खेल। निश्चित तौर पे जी जोड़ी काफी महत्वपूर्ण प्रयास, ऐसे समय में परिस्थितियों को संभाला, न सिर्फ परिस्थितियां बल्कि पारी को संभालते हुए अंत तक ले जाने का प्रयास, और बेहतरीन फिनिशर माने जाते हैं आसिफ मंसूर, जो फैसलदार के साथ मिलकर, और फैसलदार एक और तेज तरार बल्लेबाज। इस बार फिर बड़ा स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ है, वहां खिलाड़ी जा रहे हैं और उन्हें सफाई के साथ गेंद को फील्ड कर लिया। केवल 1 रन मिलेगा फैसलदार को। 1 रन के साथ वे पहुंच गए 15 पे 12 गेंदों से, 114 पे 5, 16 ओवर समाप्त। 114 for the loss of 5. 4 overs remaining, and now they require exactly 40, 10 and over to win this one. 4 overs, 10 and over, 5 wickets in kitty, and slightly edge over their opponent team as far as Sky Star is concerned. And as of now, we can compare, and if we compare, it's little, I can call it little uncharacteristic, or that contrasting character, or the contrasting, if we compare both the teams, because now Sky Star has an edge over their opponent team. Well, they lost quite a few at the fag end, but these two have been able to apply themselves, adjust themselves, and adapted themselves nicely here, and they are milking bowlers, pacing things. They are scoring at a good pace, and now they're milking the bowlers and hitting the gaps, maneuvering gaps, manipulating the gaps. It's 114 for the loss of 5, and these two stitched a partnership and got together, and now they're still going strong, they're still going good, and they're changing the bowling. It's going to be Basit Butt to ball again. He's brought into the attack for the final spell. This is going to be 1 over spell for Basit, and it's over number 17. We're in 24 balls, 40 runs needed. All the bloggers, drop your comments and do write us. What do you think? What you think about this one, and where do you gonna rate this encounter, this game of cricket? Do you believe that Faisal Dar and Asim Mas are going to be enough for Sky Star to take them over the line? Can they overpower United Impetus, or do you believe that Basit and they got enough firepower and a pace battery, including the spin in between with a variety on offer? Can they dent to the confidence? And you have ample time in the world. Start dropping your comments and do write us. Hashtag sports time and write us. It is 114 for the loss of 5. Now 24 balls, 40 needed. First ball from Basit, and he works it away. Call is for 2, but can't get the second one, just a single. That's all he's gonna get here. Now they need 39 of 23 balls. On strike will be Asim Maras, who's under 31 of 25. Faisal Dar 16 of 13. Basit Butt in his 4th over, 3.1, none for 10. Excellent figures so far, but you never know what's gonna come your way, our way in remaining 5 balls. Even one big over can spoil your figures. Here is ball number 2. 23 balls, 39 needed. Maras pulls that one, but there is Alim Sheikh. Should be one. It should be one, and it is indeed one. So that means 38 needed in remaining 22 balls. 2 balls, 2 singles, and this isn't gonna hurt anyone over here, and I think singles are not gonna put pressure on the bowling side, and it will definitely relieve the nerves of Basit, who chipped in with 2 deliveries and given away just 2 runs, 2 singles. Single is not gonna bother Basit and his entire team. But on the other side, talking of Sky Star, they need to make the ball fly in the air and into the orbit. Can they send it out of here? It is going to be interesting. 116 on the board, 5 down, over number 70. Next ball coming up, 11 of 3.2.
impressive figures. Oh, that one will surely spoil an over, and that one gentle tickle flicked around the corner behind 45 and onside down to the fine leg boundary for 4. Just Bukhara 4 and score moves to 120. Basit is little unhappy with himself. He is shaking his head. He knows that and an error in line and length, and he was punished in style and penalized in style. And iota just outside leg, little bit outside leg, and he error in line and penalized in style, punished in style, and everything that you commit a mistake in a cricket game, that is to be punished. And here is an example of that. He was punished for that delivery. Otherwise he bowled really well, brilliantly throughout the innings. Next one, good delivery. He plays with the soft hand, so direct he needed. Not a clean stop from Sahil there. One more run added. This is sensible cricket. Single and a boundary, then again a single. And look at Faisal putting pressure on the fielder. There wasn't single in fact, but he put a lot of pressure on fielder, and that earned him a single, a solitary run. 121 for the loss of 5. Now they have 20 bowlers at their disposal, and asking rate is below 10, 9.90 and over. 2 balls remaining, and Basit 3.4, none for 16. He's wicketless so far. Can he break the partnership here? Goes away from us, and Asif Mars is trying to chase that one. It's far away from that marker, wide it is. And look at Basit looking skywards, and he's gonna blame himself here, because there is nothing wrong with the umpire's call, and it was a clearly wide ball. It was far away from that marker on offside. Look at Asif Mars, he chased that one, he shuffled across, but still unable to get to it. So it is it's a wide ball, and he need to re-bowl that one. Little pressure mounting on Basit. Lot of things cooking inside his body at the moment. Whether I need to take pace off, I need to go with the pace. Let us see what he has got to Asif Mars. That's in the air. Will this be taken? Will this be taken? He has taken that. What a catch! And look at the celebration from Basit. Both arms in air and waving in air like that of Shahid Afridi style. And it's wicket number 6 going down. Polo wicket brought to by Jas Bukhara, and Nazir partnership broken. He breaks the partnership. That to the well stand between 2 talented lads of Sky Star and 2 great batters of modern age. One has the capability, one has the ability. The other one, you know that he's a boundary rider, man. He make the ball fly. That is Faisal Dar. And if you remember that TRC final, still in front of your eyes, what he did on that day. No one was expecting he will do this, and it was that dot ball which saved the other team. Otherwise, he was on verge of lifting the title that day. तलाश थी विकेट की, तलाश विकेट की, और उस तलाश को अंततः पा ही लिया। यहाँ तलाश अब बाकी रही नहीं, विकेट मिल गया 122 पे, छठा विकेट 16.5। और आमिर टाका नए बल्लेबाज, और क्या बढ़िया बल्लेबाज है। पिछली पारी कौन बुला सकता है। और आमिर टाका के वो स्ट्रोक, आमिर टाके का वो खेलने का अंदाज, उनकी वो पारी, और आज एक बार फिर आवश्यकता उनके कंधों पर, जिम्मेदारी उनके कंधों पर, और किस प्रकार से वे निभाएंगे वो दायित्व ये देखना होगा। आसिफ मंजूर उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ बने हुए हैं। वो आउट होकर, समझते आसिफ मंजूर आउट होकर पवेलियन लौटे हैं, और फैसल डार अभी नाबाद हैं 21 पे 15 गेंदों से। आमिर टाका नए बल्लेबाज 122 पे 6, 16.5, 19 गेंदें बची हैं, और 10.11 प्रति ओवर के हिसाब से यहाँ से रन बनाने, यानी कि आस्किंग रेट जो है वो 10 से ऊपर का है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कुछ दिग्गज बल्लेबाज बीच मैदान में हैं, और ऐसे में आमिर टाका जब वो मैदान में मौजूद हैं तो आशाएं बनी रहेंगी। इस समय स्थिति 122 पे 6, 32 चाहिए, 19 गेंदें बची हैं। क्या खूबसूरत समा, क्या आकर्षक प्रदर्शन। अंततः एक लंबी साझेदारी को तोड़ने में सफलता प्राप्त की वहां पर बासित भट्ट ने। 3.5, 17 रन और 1 विकेट। अनुशासन उनकी गेंदबाजी में, किफायती कसी हुई गेंदबाजी, पैनापन उनकी गेंदबाजी में आज दिखाई दिया, और ऐसे में प्रयास करते हुए कि एक और विकेट यहां से चटकाई जाए। और अगर यहां से एक सफलता मिलती है यूनाइटेड इंपोर्ट श्रीनगर की टीम को, तो फिर कहना चाहिए दबाव बढ़ेगा, संघर्षपूर्ण मुकाबला। हालांकि क्रिकेट महान अनुशंसाओं का खेल, आखिरी गेंद तक कुछ कहना संभव नहीं होगा। अभी भी ये मुकाबला संघर्षपूर्ण स्थिति में, रोमांचक स्थिति में, क्योंकि 6 विकेट गंवा दिए हैं। 16.5, 122, 10.11 इस समय रिक्वायर्ड रन रेट 7.25, करंट रन रेट
और 19 गेंदों से 32 रन चाहिए। अभी भी 4 विकेट सुरक्षित। आमिर टक्का नए बल्लेबाज, फैसलदार 21 गेंद बाद 15 गेंदों से, और बासित अपने कोटे को पूरा करने जा रहे हैं। बासित भट्ट ने 3.5 ओवर 17 रन, लेकिन एक बहुत बड़ी सफलता आसिफ मंजूर की प्राप्त की है। अपने कोटे का ये चौथा ओवर, यानी कि कुल मिलाकर आखिरी ओवर और आखिरी गेंद देकर के तैयार आमिर टक्का है। सामने 122 पे 16.5 के बाद 19 गेंदें, 32 रनों की आवश्यकता। क्या मुकाबले का परिणाम होगा? क्या मुकाबला यूनाइटेड इंपोर्ट के पक्ष में जाएगा? क्या मुकाबला स्काई स्टार बडगाम के पक्ष में जाएगा? और यहां की जीत निश्चित तौर पर हौसले बुलंद करेगी अगले क्वार्टर फाइनल मुकाबले के लिए दोनों टीमों के लिए। अगली गेंद लेकर के चले टक्का के लिए, इस बार हवा में है गेंद, विकेट मिल गया। वहां पर टक्का को वापस लौटना पड़ेगा और यहां संघर्ष बढ़ता हुआ, रोमांचक स्थिति बढ़ती हुई। 122 पे 7वां विकेट, 2 गेंदों से 2 विकेट, 17 के बाद 122, 18 गेंदों से 32। For the first time in front of myself, I'm talking of myself, it's the first experience that I have seen Taka going for golden duck. I have seen him batting at Crewe. I saw him batting at Heart of City Srinagar. He batted brilliantly. And wherever I saw him over the past 2 years, he has been up to the mark. But this is the first golden duck. And on Ticket Sports Time, I think it is the first golden duck for Taka today. And it wasn't a tuck around the corner. It was a gentle jab and ball leading, ball of that leading edge of lobes off in air, and fielder does very well. Takes a very good catch in the end. So one more wicket goes down. 2-2 for Bassett, and what a spell! 4 overs 2 for 17. Bowled valiantly. It was well in effort and bravery. Look at his bravery as a bowler, as a true sportsman, the way he bowled here. And you know that great athleticism is all about fight it out, sweat it out, never give up. He bowled really well, and Sabajan and others are not happy that Taka is gone for golden duck. बासित भट्ट का फिजिक देखिए, उनके हाव भाव, उनकी शक्ल सूरत बिल्कुल खालिद भट्ट के साथ मिलती हुई, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे दो धर्मवीर बीच मैदान में हो। ये नए ओवर की शुरुआत, लेकिन क्या खूबसूरत फील्डिंग का प्रदर्शन। 1 रन जरूर मिला, और 1 रन के साथ 123 पे 7, 17.1, 17 गेंदें, 31 रन। Well, different people, Khushi Bhatt, Sabajan and others are the part of live broadcast, and no one would have wanted Taka going back to pavilion early, but it was early exit and the latest exit for the man, and couldn't do very much today. Golden duck, gone for naught today when his team needed him badly. Now it's down to Nasir Rasool, another South Kashmir boy on strike. Oh, that's a great shot. Superb commitment, but saw the fielder in place. Just one. A single is all he's going to get here. Faizan Roof and United Imports will be pretty happy at the moment. Will be happy with will be assured, not rest assured, but little assured, we can say, and I can say. Well, they will be feeling little easy out there in the middle at the moment, because each and every single will give them a kind of confidence, but a big shot will definitely derail them and dent to their confidence. Here is the next one, third ball. Oh, that's in the air, that's launched. There is a fielder. Could this be? Could this be? It is indeed. He's gone here, and nicely held by the man. Basit bought the man, backtracks, and Faisaldar is gone. He got the elevation. It was into the Chandigarh sky. For a while I thought he's got a good elevation, he might get the desired distance, but not the case, not this time round. And fielder gets underneath, settling for the ball, satellite underneath in the end, and takes a wonderful catch. It was with that verbal movement up the air coming downwards. Have you seen that Isaac Newton's apple? Talking of that apple falling downwards, and there was a verbal in air, but he takes it in the end. Brilliant catch. 7-1 bites the dust. 1, 2, 4 for 7. And see, we were just talking about that. It is a contrasting character. We can't compare both the teams and their approach. But look at the pushback, and look at their approach. It has been interesting and impressive one. And at the back end, now they have decided to put brakes on.
They're quite successful in doing that, and the way they're pulling things back, one has to admire their skills. तो देखिए यहाँ जिस प्रकार से ये टीम खेली है, और न सिर्फ ये मुकाबला आज जीतेंगे बल्कि उनका मोरल जो है वो जो है बूस्ट होगा, सातवें आसमान पे उत्साह होगा कल जब वो इसी मैदान पे, इसी विकेट पे और इसी टीम के विरुद्ध खेलने उतरेंगे। तो मैं समझता हूँ बड़े इरादों के साथ, स्पष्ट इरादों के साथ वो जब मैदान में उतरेंगे तो एक प्लस पॉइंट कहा जा सकता है इस जीत से, यदि यूनाइटेड इंपोर्ट्स की टीम ये मुकाबला जीतती है। Exactly, and there will be little edge over the other side. It's 1-2 for Shabir. Is in, first ball in the air, there is a fielder, can't make it to the ball, and ball just short of in there. And again there was a lot of things were going on, and he had his heart in his mouth for a while, but it is just short of man there, and the West does very well, and Faizan Roof is happy with his fielder and the way he was approaching the ball, the way he was heading towards the ball. And he took few steps ahead but can't make it to the ball, and he puts his hands together, still happy with his effort there. The last one down the leg side, is it a wide? He wided that one, does? Yes, he does. It is one more run. Does he wided that one? It is indeed 128, 126 for 8, and they're still 28 runs behind. And talking of number of balls, they have 14 balls. The asking rate is 12 and over now. The double number of runs they require. Who's going to win this one? This is the last league round robin game underway. Oh, it's a no ball. It is a no ball. Where has that one gone? Is it a boundary? Oh, that's gone all the way. 6 more. 133. He need to re-bowl that one. Nazir, what was going on that occasion? What was Faizan Roof doing there? What was he looking for on that occasion? Do you think that he was experimenting there? Even Khalid Bhatt is telling him, don't experiment. This is in Jammu Kashmir based at any factory. It is better to bowl here properly here, keep things tight and stick to the basics. Don't experiment. This is a cricket match going on, and you don't need to experiment here. Keep things tight and bowl well. Someone is from Uganda. The back of the hand slower this time in the gap, but there is field and wanted a second, can't get that. A single is all he's gonna get. Look at that return. It was electric quick return from long on. Only a single, 130 for 20 needed in 13 balls. Not a big concern. Yeah, they don't have too much resources available, but there are enough balls to make a statement and to take it over the line. And I still believe they're in if they bat till the very last ball. देखिए क्योंकि उनके पास अभी भी 20 रन यहाँ से दूर है जीत से। स्काई स्टार बडगाम की 17.5 134 आखिरी गेंद देकर के 18वें ओवर की चले। इस बार गति में परिवर्तन, चकमा दिया, डॉट आखिरी गेंद, ओवर समाप्त। 18 के बाद 134 पे 8, 2 विकेट सुरक्षित हैं। 12 गेंदें यहाँ शेष और 20 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए स्काई स्टार बडगाम की टीम को। Well, it isn't over yet. It isn't over yet. So don't go anyway. Don't fade away. Come back, warm up, and watch the game which is underway. And we have Shaukat Ahmed Law from Uganda. And look at his Law, and he's talking. It's Munjani and Nazir Saab in the comment box. Thank you very much, brother Shaukat, for your kind words, for your love. He's watching from Uganda at the moment. Well, Uganda far away from this part of the world. It is in the North Africa. Well, then we have an assignment underway here. That is the league round robin final match of Pool D underway here. It's 134 for the loss of 8. 20 needed. All the beloved viewers, drop your comments and do write us. What do you think? Who's going to win this one? Are your comments, are your money on United Imports? Are you going to put your money for Sky Star Budgam? Do write us. Penultimate or beginners. And first ball cut away nicely in the gap, will hit the boundary. It's the boundary of the very first ball. Just Bukhara for coming, and then it's 16 runs. Nazir, it isn't over yet, so don't go anywhere. Come back, we have a game on. यासिर रसूल के बल्ले से ये बढ़िया स्ट्रोक, चौका मिला यहाँ जस्ट बुखारा। 138 पे 8 पहुंचा दिया। 18.1 ओवर की गेंदबाजी। अब 11 गेंदों से 16 रनों की आवश्यकता। मुकाबला किसके पक्ष में जाएगा ये देखना होगा, क्योंकि मुजम्मिल
इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। एक बढ़िया गेंदबाज अपने कोटे को ये पूरा करने जा रहे हैं। अगली गेंद और इस बार सीधे बल्ले से खेला, स्ट्रेट ड्राइव, बड़ी लंबी दौड़ लगानी पड़ी खिलाड़ी को। जब तक भी गेंद को फील्ड करते, एक रन और खाते में जुड़ा और एक रन के साथ ही कुल योग बढ़ता हुआ 139, 8 विकेट के नुकसान पे 18.2 ओवर की गेंदबाजी, 10 गेंदों से 15 रनों की आवश्यकता। शाहिद शब्बीर, नासिर रसूल, ये जोड़ी बीच मैदान में क्या अंत तक इस पारी को ले जा पाएंगे? क्या जीत उनके पक्ष में होगी? क्या फिर यहां से विकेट मिलेगा? क्या जीत यूनाइटेड इंपोर्ट के खाते में जाएगी? कड़ा यहां संघर्ष, कड़ी चुनौती, रोमांचक स्थिति और ऐसे में अभी भी 15 रनों की आवश्यकता। अगली गेंद मुजम्मिल के कदमों का इस्तेमाल किया और इस बार लॉन्ग ऑफ की ओर धकेला, हालांकि खिलाड़ी ने फील्ड कर लिया। केवल एक रन मिलेगा, एक रन और खाते में 140 पे 8, 18.3 के बाद गेंदें बची हैं 9, रन चाहिए 14। Just 40 needed of 9 balls. 1 over and 3 balls remaining. This is JK Sports Time, bringing you this epic battle between Sky Star and we got the other team, that is United Imports. Imports have 154 to defend. They are still 14 in the kitty. 9 balls remaining. Here is ball number 4. Nasir Rasool on strike and looks to scoop that run. There is a shot for LBW and umpire is unmoved. He walks away and Nasir Sofi goes back for the second. Leg by signalled. And look at that decision. Good one from umpire. But it takes bravery. It takes brave effort. And 2 more runs at 142 for 8. 18.4, 142, 60 विकेट के नुकसान पे और अभी भी 12 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। 8 गेंदें बची है यहाँ स्काई स्टार बडगाम के पास। अगली गेंद मुजम्मिल फेरोज की लेकर के तैयार, सामने नासिर रसूल 13 पे 6 गेंदों से। इस बार बड़ा स्ट्रोक लेकिन अंदरूनी सिरा, गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए। एक और जस्ट बुखारा चौका, 146 पे 8, 18.5 के बाद अब यहाँ से जीत के लिए 8 रनों की आवश्यकता। 7 गेंदें बची है। Well, timely boundary, just Bukhara for much needed one. 146 on the board, just 8 needed. Now into single digits. Now into single figures. They need now 8 runs to win this one. The required rate is down to 6.86. Is the last ball of over number 19. Penultimate over. Last ball. Nasir Sofi on strike. Here is Muzammil to Nasir. And Nasir plays it down towards mid-off. Will pick up one. Is he going to get back? Get the second one? No, doesn't. Just a single. He's going to keep the strike for the next 7. Nasir, it is in over yet. Just still 7 more runs needed. 6 balls. Where is your money going? And all the beloved viewers on JK Sports Time, do drop your comments and write to us. Where is your money going? Do you believe that there is something alive for United Imports? देखिए अभी भी 6 गेंदों की आवश्यकता और 7 रन बनाना है। यहाँ से मुकाबला किसी भी टीम के पक्ष में जा सकता है, निर्णय कुछ भी हो सकता है क्योंकि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल। यहाँ एक अच्छी गेंद आपका काम तमाम और एक खराब गेंद तो नतीजा विपक्षी के पक्ष में जाएगा। 147 पे 8, 19 के बाद गेंदे 6, रन चाहिए 7। आखिरी ओवर किसके हाथ में होगा? ये कड़ा संघर्ष इस मुकाबले का बेहतरीन परिणाम क्या होगा, ये कुछ ही समय के बाद हमारे पास निर्णय जरूर आएगा। लेकिन इस समय संघर्षपूर्ण और रोमांचक स्थिति इस मुकाबले में बनी हुई। What a game, what a match on the way. Who would have thought that this will be going down to the wire? It is exactly epic battle. And whosoever wins this one, but this is going to be the victory of cricket at the end of the day. What a match we have had here at the Centre. 147 for 8 after 19 overs. 7 needed in an over with just 2 wickets in hand. We're into the tail. These are the tail enders. And it is 147 for the loss of 8. 7 needed. And talking of proud sponsor of JK Sports Time, we are on Facebook, we are on YouTube, we are on WhatsApp, we are on YouTube, and we are everywhere. Talking of social media networking sites and talking about proud sponsors, I start with Anthem Sports India, Fashion Fiesta, Shining Star Pumper, MHM Multi-Brand, Fashion Store, Agriclan, Magam. We got Just Bukhara, Green Lines Cricket Club, Delgate Sports Club, and Hamdan Hurricanes. The importers and the exporters back home. It's 147 for the loss of 8. And do remember, tomorrow is going to be the quarterfinal. One last quarterfinal really awaits all of us. We'll be back tomorrow early in the morning with that all important. And these are going to be the 2 teams will be locking on us. We'll be up against each other to fight it out. And let us see who's going to make it to the semi-finals. It is going to be Faizan Roof to bowl the final over. 7 needed. Nasir on strike. There is play slip in place.
First ball, back of the end, slower again, could be tight, but he decided again as the share there, one more run at it. Now they need 6 in 5 balls. 5 गेंदें बची है, 6 रन चाहिए, 148 पे 8, 19.1 ओवर की गेंदबाजी हुई है। और क्या कड़ा संघर्ष है इस मुकाबले में, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, क्या बेहतरीन गेंदबाजी, क्षेत्र रक्षण कमाल का और यहाँ प्रदर्शन भी कमाल का। और ऐसे में परिणाम क्या होगा ये देखना होगा। 5 गेंदें और अभी भी 6 रनों की आवश्यकता। अगली गेंद दे करके चले फैजान, सामने है शाहिद शब्बीर, 6 रनों की आवश्यकता। 5 गेंदें, इस बार बोल्ड कर दिया, गेंद सीधे स्टंप्स में जा लगे। मुकाबला भी समाप्त हुआ नहीं है और अभी भी 4 गेंदें बची है और 6 रनों की आवश्यकता। आखिरी जोड़ी होगी मैदान में। I told you don't walk away. It isn't over yet. It is still game on. It is game alive about the teams. What a wicket and what a strike from Faizan Roof here. He struck at the flag and it's 9 down, 148. They're still 6 away. 6 रन चाहिए और अभी भी 4 गेंदों का आना बाकी। लेकिन यहाँ आखिरी जोड़ी होगी क्योंकि आखिरी ओवर है, आखिरी जोड़ी, आखिरी आस लगे हुए। तो निश्चित तौर पे परिणाम किस ओर जाएगा, परिणाम किसके पक्ष में जाएगा ये देखना होगा। 4 गेंदों से 6 रनों की आवश्यकता। स्काई स्टार बडगाम की टीम इस समय काफी चिंता का विषय उनके शहरों पर देखने को जरूर वहां पर मिलेगा और वहीं पे चिंता जरूर यहाँ खीमे में, यहाँ क्षेत्र रक्षण की जो पूरी टीम एक दूसरे के साथ बातचीत कर रही है कि क्या यहां परिणाम होगा, क्या भी मुकाबला यहां से जीत पाएंगे। और दूसरी ओर स्काई स्टार बडगाम की टीम की अगर हम बात करें और वो भी आखिरी जोड़ी के रूप में यही आशा लगाए हुए हैं कि क्या ये रन बटोरे जाएंगे यहां से, क्या इस मुकाबले को जीता जाएगा। 4 गेंदें, 6 रनों की आवश्यकता। आखिरी जोड़ी बीच मैदान में स्काई स्टार बडगाम की। 148 for the loss of 9. It is Gavalagi in at number 11. Pressure will be on Gavalagi. Well, Faizan will try to hit the deck hard. He will be searching for a Yorker delivery here. Look at Gavalagi. He's having absolute fun with the style of the opponent side there. And they were just trying to up the tempo and passing on comments on Gavalagi. He's getting ready. Gava says, I'm here to bite the bullet but never gonna give up. Here is ball number 3. Will this be the final ball of inning number 2? Or is there something alive still? Is there something left behind? In this one, we'll have to wait and watch. Where is this one going? Is it going to be another wicket? Another wicket on the trot, or is it going to be something special for Sky Star Budgam? They are still 6 runs behind and away. It's going to be leggy on strike. Faizan Roof, the premium pacer, will bowl the next one. Everything is in readiness. Cover marking fresh card and is getting ready. He locked his position and will face the ball number 3 of over number 20. 154 is the target. They are still 6 away. Here is Faizan, ball number 3 to cover leggy. Good delivery, but he flicks it round the corner, will pick up a single, and that will mean Nasir Sofi has a job on his hands to do. 3 गेंदें, 5 रनों की आवश्यकता। 149 पे 9, 19.3 ओवर की गेंदबाजी। यहाँ करो या मरो की स्थिति, क्योंकि मुकाबला संघर्षपूर्ण स्थिति में और अभी भी 3 गेंदों से 5 रनों की आवश्यकता। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, परों को फैला और आसमान उड़ान देखता है। निश्चित तौर पे यहाँ बढ़िया प्रदर्शन करना होगा इन परिस्थितियों में। 3 गेंदों से 5 रनों की आवश्यकता। चले अगली गेंद दे करके सामने है नासिर, उनके लिए ये गेंद कदमों का इस्तेमाल, बोल्ड कर दिया। यहाँ रिजल्ट जो है वो यूनाइटेड इंपोर्ट के पक्ष में, मुकाबला जीत लिया यूनाइटेड इंपोर्ट ने 5 रनों से। ये जानकारी देते हुए मैं शेख नजीर साथी कमेंटेटर मुनव्वर तनवीर के साथ वापस जेके स्पोर्ट्स टाइम के स्टूडियो लिए चलता हूं, इस उम्मीद के साथ कल फिर से मिलेंगे निर्णायक क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इसी मैदान में ठीक समय अनुसार 10 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।